My right is Professor Manoj Sinha on my left is ठीक है, कर दिया। My apologies. डाउनलोड आप ही करेंगे आपके लॉन्च। Since most of you would like to speak, so I would like each one of you to be as brief as possible so that everyone gets a chance to speak. We are a group of activists who are involved. There is no audience. Ansari sir, please come. So, let me begin with that this exercise will lead to greater understanding. Hopefully, it normalizes situation in Jammu and Kashmir and is to the subcontinent. That's the purpose of a meeting of this kind. We are exploring. It's a thought-provoking session, brainstorming session, so that we come with ideas which will help us in resolving the issue and bringing tranquility and peace in the subcontinent. May I request Dulat Saab, who doesn't require an introduction anywhere, to please initiate the discussion, and he will take 5 minutes. He will be followed by a young activist from Jammu, Salim Mir, to offer his comments. Mir Saab will have the second privilege. Dulat Saab. साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। एंड आपकी जो डिटर्मिनेशन है, परसिवेरेंस है, मैं दाद देता हूँ, क्योंकि मुझे हार मान चुके, लेकिन आप हार नहीं मानते। ये अपने एक कश्मीरी ट्रेट है, नहीं मानते, और इसलिए दिस इज अ ग्रेट थिंग। अब मैं देख रहा हूँ कि आपने मुझे परमानेंट ओपनिंग बैट्समैन भी बना दिया, क्या शुरुआत मैं ही करूँ। तो जो थोड़ा बहुत मुझे समझ है, मैं दोस्तों के सामने पेश करता हूँ। कश्मीर में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो पहली बात तो यह है कि कश्मीर के हालात अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं। वहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कहें कि भाई अच्छी हो रही है। हालांकि एक चीज है कि भाई मिलिटरीली हम कुछ काबू में हैं। हमारी जो मस्कुलर पॉलिसी है वो काफी हद तक कामयाब हुई है। तो उससे मिलिटेंसी कुछ कम हुई, सुनने में आता है कि हो गई है, और जो भी है अच्छा पॉजिटिव। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ लड़के हैं, बाहर के हों या अपने हों, वो जब चाहते हैं वो बार को एक आध को मार देते हैं। उसमें चाहे बिहारी लेबर हो या अपने कश्मीरी पंडित हो, वो किस्सा साथ के साथ चल रहा है कश्मीर में। और इन लड़कों का जहाँ तक मुझे समझ है, किसी को पता भी नहीं चलता कि ये कौन है, कहाँ से आए, कहाँ गए। लेकिन वो अपना कारोबार उन्होंने जारी रखा हुआ है। कब बढ़ेगा, कब कम होगा या कब खत्म होगा, इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कश्मीर का जो मसला है ना,
ये मिलिट्री मसला नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर मसला भी नहीं, ये चीज हम बार बार कह चुके हैं। ये एक पॉलिटिकल मसला है, ये एक साइकोलॉजिकल मसला है, ये एक इमोशनल मसला है। तो जब तक कि हम उस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हालात सुधरने वाले नहीं है। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब 370 का एब्रोगेशन हुआ 2019 में, कुछ लड़के थे जो खुश थे कि अच्छा हुआ ये लोग बंद हुए, ये पुराने जो ठेकेदार हैं उनको बंद रखना चाहिए। लेकिन आज वो बात कोई नहीं कहता, क्योंकि अब 3.5 साल हो रहे हैं, तो सब कहते हैं कि पहली बार मैं सुनने में आता है कश्मीर से कि सब लोग चाहते हैं इलेक्शन हो, किसी भी किस्म की सरकार आए, चाहे रद्दी से रद्दी आए, लेकिन अपनी सरकार आए। तो अब मेरा कहने का मतलब ये भी है कि एक चीफ सेक्रेटरी एक चीफ मिनिस्टर की पोजीशन नहीं ले सकता, तो चाहे कितना भी काबिल हो। और ये भी सुनने में आता है कि अब कश्मीर में होर्डिंग्स निकलने शुरू हुए हैं जिनमें ब्यूरोक्रेट्स का नाम, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम नहीं है, महबूब मुफ्ती का नाम नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का नाम। तो उससे भी वहां लोगों को खुंदक आती है कि भाई क्या हो रहा है और क्या होगा। अब हम पीछे चले 1947 तक भी पहुंचे, तो हिंदुस्तान का जहां तक मुझे समझ है एक ही प्रोजेक्ट रहा है और एक ही वहां कोशिश रही है कि कश्मीर को आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम किया जाए, कश्मीरियों के दिमाग से पाकिस्तान निकाला जाए वंस एंड फॉर ऑल। और उसमें मैं समझता हूं कि वी हैव बीन नॉट बाय एंड लार्ज बट मोर देन सक्सेसफुल, क्योंकि कश्मीर अब इस तौर पे आप पहुंचाए कि वो मेन स्ट्रीम तकरीबन हो चुका है और वो मेन स्ट्रीम के लिए तैयार है। तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी एक पाकिस्तान का ऐसा पैरानोया है हमारे दिमाग में कि पाकिस्तान नाम आता है, कहते हैं नहीं इसके साथ हम बात नहीं करें। अब एक मीरवाइज है, तब से है मेरे दिमाग में, मेरी समझ में, वो कब से मेन स्ट्रीम है, उससे कोई क्यों नहीं राबता या क्यों नहीं बातचीत करता। राबता तो होगा खैर, पर क्यों नहीं कोई बातचीत करता मीरवाइज से, क्योंकि उसके पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहे। तो उसको अगर हम फ्लिप साइड देखें तो मुझे ये बताया कश्मीर में कि किस किस के कॉन्टैक्ट है और किस किस के नहीं। 2002 से कम 2002 से, जब 2002 में इलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनका पास कांटेक्ट है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कांटेक्ट नहीं रखिएगा तो कश्मीरी जाएगा कहाँ, फिर उधर ही देखता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेट मी ऐड कि कश्मीरियों के दिमाग से पाकिस्तान निकल चुका, उनको पाकिस्तान से तकरीबन नफरत है कि इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क ही किया, हमारा कोई फायदा नहीं किया है। तो ये कहानी भी काफी पुरानी है, लेकिन
आज कश्मीरी जानता है कि पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन जब हम कश्मीरियों के साथ राब्ता नहीं रखते हैं, ओपन राब्ता। लेकिन एक टाइम था कि हम लोग जिस धंधे में थे, हम हुर्रियत वालों से बात करते थे, सेपरेटिस्ट से बात करते थे, मिलिटेंट से बात करते थे। कुछ समय लगा बिफोर अडवाणी जी तैयार हुए बातचीत के लिए, पर हुए। अडवाणी जी ने बात की, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट हुर्रियत, उसके साथ अडवाणी जी ने बात की। तो अब अडवाणी जी कब बात करेंगे, मैं तो उसी इंतजार में हूँ कि कब बातचीत शुरू होगी ओपनली। क्योंकि कश्मीर में जिस चीज की जरूरत है वो है रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसको प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 96 में समझ गए थे। 6 साल गवर्नर रूल रहा था, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलने वाला ना, इलेक्शन जरूरी है, पॉलिटिकल सरकार जरूरी है। और फिर इलेक्शन हुआ, 96 सरकार बनी। उससे मिलिटेंसी को एक बड़ा झटका लगा। तो आज जो है सुनने में आता है इधर उधर के इलेक्शन होंगे। 3 महीने पहले ये खबर थी कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। अब अक्टूबर नवंबर तो क्या, अब लोग कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि मार्च अप्रैल में भी इलेक्शन शायद नहीं होगा। तो अगर मार्च अप्रैल में नहीं होगा तो फिर कहेंगे अक्टूबर नवंबर में, और फिर हम 24 के करीब आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 24 के बाद ही होगा, जनरल इलेक्शन के बाद। देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, और ये कैसे होगा। कश्मीरियों की अपनी राय जो ये है कि भाई हमें इकट्ठे रहना चाहिए, मिलके चलना चाहिए, इसीलिए वो पीएचडी बना था। और आज भी डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं, महबूबा भी यही कहती है, वी नीड टू यूनाइट और पेरिश। तो इस किस्म के हालात हैं कश्मीर में, और बातचीत जरूरी है और इलेक्शन भी जरूरी है। अब शाह साहब ने कह दिया माय टाइम इज अप, सो थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much. Meet Saab. And then it's open. He is a young activist. He's from the Jammu region, but he is active and involved both in Kashmir and Jammu. शुक्रिया साहब। मैंने गुजारिश की थी कि 4-6 लोग बोले, उसके बाद चलिए मैं भी 1-2 मिनट ले लूँ। और आपका हुक्म है। तो सबसे पहले मैं पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन, बल्कि पिछले 40 बरसों से आप जम्मू कश्मीर के दर्द को, जम्मू कश्मीर के पेन को, वहाँ की कुड़न को डिस्कस करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म फराहम करते रहे। आज भी श्रीनगर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर हम कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ के दर्द को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ की सफरिंग को, क्योंकि वहाँ पे इजाजत नहीं, आप डिस्कस नहीं कर सकते आपके रोजमर्रा के मामला। और शाह साहब ने भी कई बार आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 कोशिश की कि वहाँ पे लोगों से बात की जाए, लेकिन नहीं करने की। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर में एक तरह से कर्फ्यू बल्कि ओपन जेल में तब्दील किया गया, जब हमारी सोच पे पहरे बैठाए गए, जब हमारी जबान पे कदगने लगाए गए, जब मीडिया को टोटल ब्लैक आउट किया गया, और शाह साहब ही मुझे लगता है पहले शख्स है जिन्होंने दिल्ली में भी और जम्मू में भी चंद एक्टिविस्ट को जमा किया और हमने उस दर्द को बांटा एक दूसरे से। और मैं इसके साथ साथ मनोज झा साहब से उनकी
सोच रखने वाले ऐसे कई लोगों को जो आज की भारतीय पार्लियामेंट में कश्मीर की आवाज बने हुए हैं, जो एक ह्यूमैन अप्रोच के साथ ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की बात करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम का जो दर्द है, जो पेन है, जो, और मुझे नहीं लगता कि अभी मैं दुलत साहब को कश्मीर का वाजपेयी ईयर्स हम कभी पढ़ते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कश्मीर से अपने दुलत साहब से बढ़कर कोई तज्जिया नगार या कश्मीर एक्सपर्ट हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उस जमाने में भी डायलॉग और कहानी कैसे कैसे डीप स्टेट को वहां पे लेकर एक सिलसिला शुरू किया। लेकिन कभी कभी उनकी बातों में तजाद तो लगता है। बहरहाल पिछली मीटिंग में वो ये कहते हैं कि सब ठीक हो गया है, और आज भी तो उन्होंने कहा कि अब ये जो है एप्लीकेशन का बहुत बड़ा फायदा हो गया है, ये सारी बातें। लेकिन आज उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि हालात बहुत खराब है, बहुत अबतर है। और ये उन्होंने, क्योंकि उनके अल्फाज हैं कि वी हैव ए मिलिट्री कंट्रोल ओवर देयर, ये भी उन्होंने कहा है, ये उन्हीं के अल्फाज हैं। जब आप मिलिट्री माइट से आवाम को रोकेंगे, जब मिलिट्री माइट से आप कंट्रोल करेंगे, तो हालात कहाँ से बेहतर। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहनों से निकल गया, मैं भी, क्योंकि ये एक्सपर्ट है। बहरहाल वो तभी पता चलेगा जब आप वहां पे 10 लाख फौज को हटाएंगे तो कौन कहाँ खड़ा है। तो वो निकल भी कैसे सकता, वो तो स्टेक होल्डर है। आपने तो 1994 में एक रेजोल्यूशन पास करके उसको अपना हिस्सा बताया है, तो वो तो डिस्प्यूट का हिस्सा है। चलो ये कश्मीर नहीं, वो कश्मीर तो आपका है, उसके लिए तो पाकिस्तान के रोल को मानना पड़ेगा आपको। तो रही ये बात। दूसरा, हमें जहां साहब बात यह है कि हम इस वक्त जो है मुझे लगता है कि भारत सरकार कश्मीर को एड्रेस करना ही नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता, इससे पहले भी चलो एक थी पॉलिसी सरकारों की, क्योंकि इसको कश्मीर की सूरत में एक ऐसा पंचिंग बैग मिल गया है जिसको मारने से, जिसको लताड़ने से इनको वोट मिलते हैं, और ये मारते रहेंगे, कुचलते रहेंगे, कहीं कश्मीर फाइल बना देंगे, कहीं वहां के। और इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है एक फॉरेन रूल में है। जाइए आप लिस्ट मंगवा लीजिए, एक डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर असिस्टेंट सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, डीजीपी तक, आप देखिए ब्यूरोक्रेसी में क्या आलम है। छोड़िए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है क्या नहीं, को छोड़िए, आप ब्यूरोक्रेसी में देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ स्टैंड करता है। मनोज सिन्हा से लेकर बाकी देखिए आप नीचे क्या है। और ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के वासियों को आज तो सेक्रेटेरिएट के रास्ते भी बंद है। वो जब देखते हैं अजनबियत का माहौल है, ना वहां को कश्मीरी बोलने वाला मिलता है, ना डोगरी बोलने वाला मिलता है। तो एकदम से मैं कहूँगा फॉरेन रूल वहां पे चल रहा है। और एक्सटॉर्शन और करप्शन, आप जो बता रहे थे, जिस बात का पहाड़ा पढ़ते रहे कि 370 और 35 से जो है ये करप्शन की वजूहात थी, आप देखिए पैदल पे पिछले 2 सालों में कम से कम 3 लिस्टें स्क्रैप की गई, इस बिना पर कि यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन में जो करप्शन हुआ, दांतियां हुई, 600 करोड़, 2500 करोड़, ये करोड़, वो करोड़, लिस्ट निकाली जाती है, पहले एडवर्टाइज की जाती है, बच्चों को कहा जाता है कि भाई आप फॉर्म भरिए, करोड़ रुपए जमा किए जाते हैं, 500,000 की सूरत में बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर एक खबर आती है, फिर वो इसमें कहीं ये हुआ, वो हुआ, इसमें करप्शन हुआ है, इसमें मनी हैज एक्सचेंज है। फिर एक खबर आती है मनोज सिन्हा साहब, वो फिर बड़े वो बनते हैं मुत्तकी और परहेजगार, क्या कहिए, वो कहते हैं जिसको स्क्रैप किए थे, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर सीबीआई और दूसरी एजेंसी को, और ऐसी कम से कम अब तक जो है 3 लिस्टें खजूरिया साहब, वो स्क्रैप जिसमें हजारों बच्चों का मुस्तकबिल जो है दाव पे लगा हुआ है, वो सड़कों पर बैठे। ये कौन सा, तुम तो कहते थे हम उसको करप्शन फ्री बनाएंगे, तो आज तुम्हें एक अदर लिस्ट नहीं दे पा रहे हो हमें करप्शन फ्री, और तुम्हें लिस्ट बनाते हो, तुम इसको कहते हो कि भाई इसमें करप्शन इन्वॉल्व है। और किसको वो कहते हैं ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजुनून से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये तो अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अमित शाह जो उसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी रहबरी का सवाल है। और इस बात का जिक्र तक ही वो करेंगे, किलिंग्स हो रही है, बाकी सारी चीजें वो उलझा रहे हैं बातों में। आज उन्होंने नई वहां पे गुज्जर पहाड़ी की सियासत शुरू कर दी है, तो लिहाजा ये इनका जो है ना, मैंने कहा इनके इंटेंशन क्लियर नहीं है कश्मीर को लेकर। और कश्मीर इस वक्त पर डेमोक्रेसी से महरूम है, वहां पे हमारी रिसोर्सेज पे वो जो है बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं, हमारे लैंड राइट्स चले गए, हमारे जॉब के राइट्स चले गए, हम तो इस वक्त कसमकुर्सी की हालत में है। और मेरा लास्ट में बात करूंगा जहां साहब से कि भारत की इंडियन सिविल सोसाइटी जो है, वो कोई भी, मुझे लगता है कि चंद लोग हैं, उनमें भी अब वो एम्पैथी, वो हमदर्दियां नहीं रही जम्मू कश्मीर को लेकर, कहीं जिक्र नहीं होता कश्मीर का, या कभी कभी आप
कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजिए, कुछ कमेटियां भेजिए, आप तो कम से कम प्रेस से बात कीजिए, कम से कम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जो कम थोड़ा सा प्रेस नोट तो आपका लगा रहे, वहां पे तो आप एक प्रेस नोट देकर देखिए, वहां कोई अखबार आपकी प्रेस नोट नहीं छापेगा क्योंकि उनको बताया गया। तो ये सूरत हाल है। तो मुझे लगता है कि सूरत हाल जो है बद से बदतर हो रही है। और अभी जो है आजकल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन तो वो करवा रहे हैं, अब वो उन्होंने ऐसा सिलसिला वहां पे बनाया कि किस तरीके से जो कश्मीर और जी जी जी, तो बस मुझे यही कहना है। तो मुझे इस गवर्नमेंट की नीयत पर भी ये शक है। ये जो आजकल करते करते अब हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सिविल सोसाइटी से कि कश्मीर का जो हकीकी नैरेटिव है, कम से कम आप तो कम से कम इसको इस हाल में मत छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Kapil Kansam, please come. You normally are 15 minutes before. Kapil Kansam, please come. Please. मीटिंग आपके लिए रुकी हुई है। आइए आइए इधर आइए प्लीज। मनोज जी आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कम। कपिल कांत साहब थोड़ा सा रेस्ट कर लें 3-4 मिनट, तब तक हमारे डॉक्टर साहब प्लीज ऑफर योर डॉक्टर। At the outset, I wish to extend my profound gratitude to Shasta for giving me the opportunity to speak. Respected Shasta, Shri Manoj Jha and S. Dulat Saab, I was listening patiently to the presentation that you made. You see, all of us understand that Kashmir is a multi-factorial. It's known to us. And there's nothing that we can get to it. But there are certain things which we need to understand and which we need to talk about. You see, India is a secular plural democracy. And the most unfortunate part of the story in Kashmir is that it is passing through a stage of crisis of secularism and crisis of pluralism. And when we talk about secularism, when we talk about pluralism, minorities constitute a factorial importance in the secular construct of Kashmir. When I say that, so my argument would be all this conversation, all this presentation, minorities of Kashmir are central to the entire debate of Kashmir. And unfortunately, for all these 32 years, my observation has been that the minorities have been given a backseat. I regret to say that they are really the unfortunate people, unforgotten people of Kashmir today. See, I have been a victim of this militancy. I have been a victim of this terrorism, and I have been living as an exile for almost 40 years now. And during all these 40 years, apart from one whole-scale exodus forced upon us in early 1990, then from 1990 onwards till 2000, we had to see Sangram Pora's mass massacre, we had to see Nadi Margs, we have to see Chitti Singh Pora, we had to see Delwani massacres, we had to see Kaluchak massacres, so on and so forth. And thereafter, a new kind of a wave emerged, which we know by the name of hybrid, which we know by the name of faceless. Therefore, when we focus our arguments on what is happening inside Kashmir, there is administrative problem we can understand, there are political problems we can understand, there are social problems we can understand, but we only refer it to a particular section of the society. While as Kashmiri brothers who are living as exiles constitute a major component of that civil society of Kashmir. Therefore, what do we have
What are we suffering from? We are suffering from the onslaught waged by religious radicalization and a psychological campaign against us. Please remember, apart from physically throwing us out of the Valley of Kashmir, there is an extreme psychological injury inflicted on this section of the society. When we talk about way forward, my argument would be straight that unless and until you rehabilitate those people who are living as exiles in their own country, no way forward is possible. You have to create a mental space for this argument, which unfortunately is confined, is cocooned to certain things like excesses have happened. Of course, excesses might happen. Excesses too are happening. Maybe there might be a collateral damage in the days to come because of this thing. But there were occasions when minorities, along with the other majority sections of the society, fought together battles. I remember in 1947, there was a Nara, Hamlavar Khabardar, Hum Kashmiri hai tayar. And I have been knocked so by time, so I will take 2 minutes, sir. Not 1 minute, but 2 minutes. Now, what is the way forward in my opinion? The way forward, in my opinion, is that we need to create a legitimate minority space for the displaced Kashmiri Pandits in the Valley of Kashmir. We need to evolve a healing touch policy for them. And there's an effort to erase the displaced Kashmiri Pandits from the socio-psychological memory of Kashmir. That process has to be stopped. And then, how all these things have to be done, we need to constitute a minority commission in the Valley of Kashmir, because the minority management of Kashmir, UT or state, whatever you call it, has been far from satisfactory. You see, this minority management has to be consistent with the rest of the country. Rest of the country has a minority commission to look after its minorities. Why don't we have a minority commission to look after the minorities of Kashmir? Thank you so much. God bless you all. Thank you very much. I have 3 people have raised hands. So I'll begin with Waqar Bhatti. His well-known activities is on the television every day. But remember the time, Waqar. 4 minutes. On the island, Rita Malchan. मनोजा साहब को पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनके साथ बैठा हूँ। एक पार्लियामेंट में हमेशा उनको हमने सुना है और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है भारत के मुसलमानों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए। हमेशा वो बोलते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमेशा कश्मीर के लिए भी उन्होंने जब बात की है तो खुल के बात की है। उसके बाद शाह साहब को तो क्या कहना, इसके लिए भी तो शुक्रिया। अब जी बोलते हैं। अब हर एक इंसान अपने तरीके, मैं कश्मीर में एक्टिविज्म करता हूँ और हमारे एक्टिविस्ट भी कश्मीर से आए हैं। मैं यहाँ जम्मू कश्मीर को ये नहीं कहूँगा कि किसकी क्या, लेकिन आगे के लिए क्या होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, इससे पहले क्या हुआ है सबको पता है, और आगे क्या होना चाहिए ये भी हम सबको चर्चा करनी है और आगे के लिए सोचना है। जहां तक मैं सोचता हूँ और जम्मू कश्मीर का आम नौजवान सोचता है, जहां तक मुझे पता है, और जम्मू कश्मीर का एक एक नौजवान, बहन, बुजुर्ग, माँ, बाप, बेटा यही सोचता है कि हमको वो जिंदगी दी जाए जो जिंदगी एक दिल्ली वाला जीता है, एक महाराष्ट्र वाला जीता है, जिसको डर ना हो बाहर निकलने में, जिस माँ को बच्चे का डर ना हो कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, वो सही सलामत आएगा या नहीं आएगा। वो चाहती है कि मेरे बच्चे के लिए वो जिंदगी दी जाए जैसे दिल्ली में दी जाती है, उत्तर प्रदेश में दी जाती है, महाराष्ट्र में दी जाती है या इस्लामाबाद में दी जाती है। 1947 से हम लोगों को मारा जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान बने नहीं थे उससे पहले जम्मू कश्मीर का इतिहास है। एक बहुत बड़ी रियासत को टुकड़ों में बांट दिया, जिसके 5 टुकड़े हैं। गिलगित है उस भारत जिसको आजाद कश्मीर कहा जाता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा बना दिया, चाइना के पास कश्मीर का हिस्सा है। तो हमें टुकड़ों में बांट दिया, और टुकड़ों में बांट के हर एक ने अपने इस्तेमाल के लिए हम लोगों को जैसे बोलते हैं ना कि एक चॉकलेट है उसकी तरह तोड़ के हर एक खाना सीख रहा है और खा रहा है आज दिन तक।
हिंदुस्तान में भी राजनीति होती है कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान में भी राजनीति है कश्मीर के ऊपर, लेकिन कश्मीरियों से आज दिन तक नहीं पूछा गया कि आप क्या चाहते हो। कश्मीरी सिर्फ चाहता है अमन, पीस और सुकून, और अपना हक जो 1947 से आज दिन तक हमसे वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, भारत में जो वादे किए गए वो तो पूरे नहीं किए गए, उल्टा जो था हमारे पास वो भी हमसे छीना गया। चाहे वो 98 की बात करें, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री से शिफ्ट करना हो, 97 में किस तरीके से धांधली करनी हो, जो मास लीडर थे, जो अच्छे लोग थे, उनको वो जीते हुए चुनाव, उनको कैसे जेलों में बंद कर दिया गया, फिर वहां से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, सबको पता है। और उसके बाद आज दिन तक ज्यादती और जुल्म के बगैर कश्मीरियों को कुछ नहीं मिला। किसी भाई ने यहाँ बात की होगी कश्मीरी हिंदू पंडित की, कोई कहेगा कश्मीरी मुस्लिम की, लेकिन मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों ने सफर किया है और आज दिन तक कर रहे हैं, और ये अब बंद होना चाहिए। आज जो जम्मू कश्मीर में इस टाइम जो हो रहा है वो दिखाने के लिए शो ऑफ, टीवी के ऊपर मैं भी आता हूँ डिबेट पे, मुझे भी पता है कि टीवी पे क्या दिखाया जाता है। आपको शो ऑफ तो बहुत किया जा रहा है, देश में भी शो ऑफ किया जा रहा है, दुनिया में भी शो ऑफ किया जा रहा है। अभी मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में अर्जोरी पीर पंजाल से हूँ, पीर पंजाल कश्मीर से, पीर पंजाल में अमित शाह साहब ने 80,000 लोग बनाए और उसके बाद बारामूला बनाए। भारत के अवाम को यह दिखाया गया देखिए जी कश्मीरी कितना हमारे साथ है, लेकिन धोखे से बनाया गया। पहाड़ियों को बोला गया कि आप हमें हम आपको एसटी देंगे। अर्जोरी में भी वही हुआ और बारामूला में भी वही हुआ। पहाड़ियों को गुजरों से लड़ाया गया, आज दो कबीले बना दिए गए और आमने सामने आज एक दूसरे को मारने के लिए आ चुके हैं। एक कह रहा मैं पिछड़ा हूँ, दूसरा कह रहा मैं पिछड़ा हूँ। आज जम्मू कश्मीर काज जो था जिसके ऊपर हमें काम करना था, उससे हमें भटका के एक छोटे छोटे काज के ऊपर लगा दिया गया। मैं आप सबसे मनोज साहब से और आप सबसे ये की गुजारिश करूंगा, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, कि जम्मू कश्मीर की आवाम सिर्फ चाहती है जम्मू कश्मीर के मसले का हल हो, एक जम्मू कश्मीर हो जो 1947 से पहले जम्मू कश्मीर था। उस जम्मू कश्मीर का सपना हर एक जम्मू कश्मीर का नागरिक देखना चाहता है, क्योंकि मैं वकार भट्टी और मेरा आधा परिवार उस पार कश्मीर में है, जिसमें से 2 बुआ मेरे इंतकाल कर चुके हैं और मेरे ताया जी भी इंतकाल कर चुके हैं, और इधर भी मेरी फैमिली इंतकाल कर चुकी है। और ऐसे हजारों जो हमारे कश्मीर के पीर पंजाल के लोगों के आधे परिवार उधर है, जो अपने मुश्किल में, परेशानी में, खुशी में, मौत में एक दूसरे से हम नहीं मिल सकते। तो हमारा कसूर क्या है? हमें क्यों नहीं एक दूसरे से मिलने दिया जा रहा? लड़ाई अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की है तो कश्मीरियों के बीच बॉर्डर क्यों बनाई हुई है? हम चाहते हैं सबसे पहले कश्मीर के अंदर ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये खुली लाइन है, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए और कश्मीरियों को मिलने दिया जाए। उसके बाद कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान से चर्चा हो, बात हो, और सीरियस तरीके से कश्मीर इशू को एड्रेस करके कश्मीर का एक पीसफुल सोल्यूशन निकाल के कश्मीरियों को जिंदगियों को बेहतर करने के लिए आगे की तरफ देखा जाए। थैंक यू वेरी मच। Rita Majanda and John there. And then Thank you, Shah Saab. First of all, my apologies for being late by 15 minutes. I was involved in an equally interesting discussion just one floor below, next to the dining hall, on Pakistan situation there and how it affects India, and I had to speak there. I don't know what is being said after loss, as having missed out so much of what had been said before. But this is a situational analysis and what you have recommended as to how we can look ahead. The situation in Jammu and Kashmir, particularly in the valley, to my sense of analysis and field visits there, many over the last year and a half, desperate. Continued and deepened sense of alienation, and what is worse in human terms, a sense of isolation. Now that is what can the
and a sense of hope. This is below obtaining that even as you see lacks of tourism, economic traffic jams, society functioning, but as I said, terrorism and militancy are in the mind. And it is the conversion of that in the mind into dynamic which makes the same body. Now, what shall we do? How many more battalions shall we send? Prevent ourselves from sending more battalions, we need to take action. And I'll identify. There is a denial of basic rights of citizens. I've been a part of the group for nearly maybe 7 years, and we have 10 reports. You can access them. In detail, we outline what are those rights of citizenry which are denied to the Kashmiris. I'm also a member of a group of 20, which has a former Home Secretary, a former Foreign Secretary, judges of the Supreme Court of India, Chief Justice of the High Courts of India, and we publish every August a report. You can access it on the net. Independent Forum for Human Rights in Jammu and Kashmir. On a 24-hour basis, day to day, you will see enumerated there, including the problems that Mr. Raina talked about, Kashmiri pundits. So, if we talk about it, G20 has just finished in Indonesia, and our top leadership has waxed eloquent on how technology has been democratized in India. Broadband has increased from 60 million to 810 million in 8 years. Access to mobile phones has increased from 150 to 750 million. My question is very simple. What about democratizing a small political space in a small state of India called Jammu and Kashmir? Because that democracy is missing there. Why have there been no elections? And why have elections been deliberately delayed through all the political engineering possible? And now, 25th of May, 5 days from of November, 5 days from today, by the Chief Election Commission itself saying that the electoral bond will become dead. And yet we have our top leadership saying only 2 days ago that election is a mandate of क्या होता है इसका मतलब क्या होता है? As far as restoration of status of state to Jammu and Kashmir, it's not being talked about at all. I'm disturbed also by targeting killing of Kashmiris, pundits particularly and non-locals. Not because, like Ramesh ji, I'm also a minority. I'm also psychopathologically affected by the clawing out of the Kashmiri pundits with their millennia-long geocultural moorings in their homes, in that soil, sacred soil, the temples, the flowers, the trees. They're as much a part of my body as I am, part of my soul. But I have a question. Maybe somebody can answer. Why is it that 4,000 Kashmiri pundits like me, living in 101 locations all around the world, without any security, not a constable there. None of them was targeted from Nandimar in 2003 when the last targeting took place till October 21. 18 long years. Why didn't that happen? There was something there. And I think that something was disturbed by 5th of August 2019. I'm willing to put my head on the block. So therefore, if there's an action, there has to be a reaction. Now, where that reaction is, I don't know. I'm not a political pundit. My job for 40 years was to fly bomber and fighter planes. But answers are with us as average citizens. Claims of terrorism having vanished. I want to put facts before you. I'll give you the quotes. I'll give you the government opinion.
incidents of violence have gone down, but everything has gone up. So what is the narrative from the government side? Terrorism has gone. It hasn't gone because you're taking one slice of that narrative which is suiting a certain point of view. In fact, I can give figures here to say terrorism has increased by way of the number of people who have got killed, not the number of violence instances of violence which have reduced. And that terrorism, militancy, whatever you call it, has gone under. And that explains the question that is being raised about hybrid military. There's a new expression of the security forces and the agencies. Because you don't know where because you're fighting a militant. Militant is fighting a state. If state finds ways and means to fight a militant also is intelligent. He knows how to bypass the normal procedure of running into the street, getting killed and shedding blood by shedding somebody else's blood, no matter how horrible it is. And of course, it has created certain schisms in the community, a cultural community, both departments. I belong to that culture because everything was common, except one factor of religion. I want to mention that media is silenced. So you will never get the truth about Kashmir unless I beseech everyone who's present here, please go to Kashmir independently. If you want me to make you meet 30 people, you can ask others to make you meet 30 people in 4 different geographies of Kashmir and have long chats like we are having here. Here it may be more public, but you go home to their home, talk, and you will get the real truth of Kashmir, not from our national dailies, and certainly not from the valley, because the valley is silent. Valley media is silenced, and you know how they are silenced. Basically, it's a question of coercion. It's a certain some degree of other means employed, and use of laws which are available plenty, whether it's WAPA or it is PMLA or whatever. What is the way forward? Very simple 4-step. Immediate ground of statehood, not a ground, restoration is being snatched from the people of Kashmir. We need to get it back to them. Without that, there will be more bloodshed, there will be more violence, there will be more targeting of people. Whether this is category A targeting or category B targeting. We must have announcement of assembly elections in the winter session of parliament, which starts, Manoj will bear me out on 7th of December. That must happen, and it is for people like him and other kindred spirits in our parliament, this great democracy of ours, to wake up this nation and say there are people who are crying in the northern parts of this country. We must throttle back deeply on the draconian laws of PMLA, PSA, WAPA, which are used very liberally against citizenry so that everything seems normal when it's not normal. And lastly, if we believe in ourselves as a proud, inclusive, pluralistic democracy, then not talking to 14 million people of Jammu and Kashmir, in whatever form the central government, the political leaders of parliament choose to do. I don't know why parliamentary, what stops the MPs from going on a visit to Kashmir? I remember they made visits to the valley earlier. The MPs as groups, maybe multi-party groups, must go to that state every month. Only then can you sort of read the riot act to the leadership and say, this is the reality. They can't disregard you. They can disregard me. I'm just a retired air marshal. They can't disregard you, your political leaders. You're elected by people of India. I leave it at that. Thank you. Welcome, Sam. Preeta, just remember the time limit. And I think after this, get one Kashmiri and then on there. Is that all right? Just because I'm a South Indian? Oh, yeah. I concede to the lady because she's a friend for 40 years, but no.
Angad and then Chandya. Thank you very much. In a sense, Kapilji, you have more or less emphasized what I wanted to pick up, and that is because Dulat Saab represents the enlightened, intelligent, mainstream voice interpreting Kashmir. I want to pick up on some of the things that you mentioned, which you weren't here to listen to. One is, as you said, there is a consensus across the board in Kashmir, Jammu and Kashmir on elections. I would agree with you there, but I would question you, and you have the historical experience. Several elections have been held in Kashmir. They have never ever been an indicator that the people of Kashmir were in agreement or had accepted the nature of the state. It was that elections were necessary because for their day-to-day life, as you have yourself very, very eloquently pointed out in referring to the holdings. Today, there are no Kashmiris that any of the people of Kashmir can appeal to, both for their daily needs like water, electricity, and so forth, nor are there any politicians. I have myself tried to access the secretariat. It's like a no-go zone. It's that entire level. One, the bureaucracy is dominant. It gives, as you said, Nisa, very much this idea of a foreign rule. It's also that you have very no access. Who do you appeal to? Elected representatives provide you that. They are not an indicator, and I think you would agree with me on that. They're not an indicator of people's acceptance. Alienation from Pakistan does not translate into acceptance of the Indian dispensation. I think I would agree with you completely that there is a shift. In fact, what surprised me, because Manojji, you were not able to go, but I did. I went for the Asma Jahangir Memorial Conference, and there was a session on Kashmir, which I did not unfortunately attend because I was speaking at a parallel session. It was very poorly attended. You cannot imagine the session we were in, which had to do with Balochistan and so forth, massively attended. But as far as Kashmir was concerned, no interest. So I think we also need to recognize what is happening in Pakistan. There are new issues that are far more alive for the Pakistanis than, in fact, the issue of Kashmir. Of course, that does not mean the importance of Kashmir for the army or for the foreign policy establishment. But I'm saying, as far as the people, the Lahore has always been very committed to Kashmir. I saw really no interest at all. If the conference attended by a multitude of people was at all representative, there was no interest. As far as, in fact, the way forward, I think it's extremely important to disabuse whatever mainstream media, mainstream people. There is nothing normal that is happening in Kashmir. We, by turning our backs and saying it is normal, are in fact only fooling ourselves, and till in fact there is a major crisis which I will not give. There is, when you talk about terrorism declining, I think this new phenomena, and it is a new phenomena, of the targeting of minorities, whether they are Bihari labor or whether they are Kashmiri Pandits, is a new one. It wasn't there before. As you pointed out, for 18 years, there was, at least in this interim period, there was none. Something new is happening, which I think we are not actually beginning. We need to grapple with, we need to understand. And finally, let us use the opportunity of India's big position on the international stage to perhaps push the government to do the action that you suggested. These are minor actions. It will certainly not resolve the problem, but at least it will begin to take the first initial baby steps, restoration of state elections. Thank you. Thank you very much. Angad, an activist from Srinagar.
Hello, I'm audible to all. Sunil, can you just check up? Because Rita's voice was not clear to me. I thought maybe that I'm more short of hearing, so. But there is some problem. So we are, please बोलिए जरा. हाँ, चालू इस मसले पे पूरा तस्लीम करना, एलॉबरेट करना कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर, व्हाट वे फॉरवर्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल लेट अस हैव सम. कश्मीर एक ऐसी कहानी बन चुकी है ना, जो आज के वक्त में सुनना भी बड़ा दर्दनाक है, उसको समझना भी बड़ा दर्दनाक है. अब आज होता है एक कैपिटल में आके इस इशू पे बात करना, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा भी महसूस हो रहा है और बड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि जैसा माहौल पूरे देश का बन चुका है, कश्मीर दी वे फॉरवर्ड से पहले तो मुझे लगता है हमें ये डिस्कस करना चाहिए इंडिया दी व्हाट वे फॉरवर्ड, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है. अब चलिए, आज कश्मीर पे ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, J&K पे, तो उसको लेके बात करते हैं. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बताऊं कि क्या वे फॉरवर्ड आकर बचा गया. इशू का कोई सिर पैर होता है और कश्मीर में वो चीजें रही नहीं. आप किसको समझाएंगे? समझाने वाले बच्चे कौन? हिंदुस्तान में पिछले 30 साल से 40 साल से जिनको स्टेक होल्डर्स, जिनको कह रहा था कि ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, अचानक एक दिन ऐसा आ गया कि सबको जेल में उठा के फेंक. अब तो हम खुद ये सोचकर परेशान हैं कि जिसको आज के दौर में रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, 30 साल बाद फिर कहेंगे कि ये आतंकवादी जेल के अंदर फेंक. इतनी हद हो गई कि जो कश्मीर में सबसे ज्यादा बदनाम सियासतदान थे, आज उनको भी कहा जा रहा है कि हमारे नहीं, और ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे. तो आखिर यकीन करके इस मसले पे जिम्मेदारी लेगा. जैसे कि हमारे यहाँ पर एक भाई थे, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज का इशू है कश्मीर में, डेफिनेटली हर जगह पे, हिंदुस्तान में भी, वो तो हर जगह पे, इसमें कोई दो राय तो नहीं. पर ये भी सच्चाई है, रिसेंटली जब राहुल भट्ट को मारा गया, तो मैं और शीबान साहब गुलजार जो है कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ बैठे रहे इन प्रोटेस्ट. तो उन्होंने हमें जो कुछ बातें कही, तो सुनकर हमें ये समझ आया कि चाहे आप कश्मीर में माइनॉरिटीज को नौकरियां देते, पैकेज देते, सब कुछ देते, लेकिन आप पीस जो है वो कश्मीर को देंगे तो अब जाकर सब जगह रहेगी. पीस पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं हो सकता, वो सबके लिए होना चाहिए. तो ये बातें जो है हमें समझनी पड़ेगी आज के टाइम. और जो मेन पॉइंट है हमारा, मुझे तो लगता है बड़ा डिस्कशन में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं व्हाट वे फॉरवर्ड. फिर से जब भी किसी से बात करने जाओ, आप उसको पूछो कश्मीर में कि व्हाट वे फॉरवर्ड आगे क्या होगा, हंसने लग जाता है. वो कहता है कि बचा क्या, सब कुछ तो हमने देख लिया. मेरे ग्रैंडफादर की जनरेशन थी, उन्हें 47 देखा. 47 के बाद जो सबसे बड़ा लीडर चुना गया कश्मीर का, जिसको रिकॉग्नाइज किया स्टेट ऑफ इंडिया ने इन शेप ऑफ कांग्रेस, इधर इट्स बीजेपी और कांग्रेस, बट इट कम्स एज अ स्टेट ऑफ इंडिया. अल्लाह कोई नहीं जान सकता. फोटो चाहे यासीन मलिक के साथ मनमोहन सिंह ने खिंचाया, लेकिन इट रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया. आज अगर बीजेपी नहीं, ये तो बहुत खतरनाक लोग थे, फिर आप क्या कर रहे थे तब? तो चीजें थोपी गई हम पे, जो सच्चाई है, इसमें दो राय कोई नहीं है. मेरी ग्रैंडफादर जनरेशन ने विटनेस किया जब कश्मीर का हस्बैंड टेटू जो है वो शेखुल्ला बनाएगा, फिर उसको हथड़ियां पहनेंगे, और हमारी ग्रैंडफादर जनरेशन जो बर्बाद हुई. फिर मेरी फादर जनरेशन आई जब इलेक्शन रिग की गई, और मेरी वो जनरेशन बर्बाद की गई. फिर एक जनरेशन मेरी आई 2019 में, और अचानक में सुबह उठा पता चला कि सब कुछ खत्म हो गया, आर्टिकल तोड़ दिया गया. तो ये जो बार बार हमारे साथ मजाक किए गए, ये वो बिट्रेयल्स हैं जो आज हम वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, ये बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं, क्योंकि देयर इज अ शेप ऑफ डेमोक्रेसी, अ फेडरल स्ट्रक्चर, और वो सारा कुछ लोगों का मजाक लगता है. आप नहीं समझा सकते आज कश्मीरियों को कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ डेमोक्रेसी, चाहे कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि वो चीजें विटनेस नहीं वैसे की गई. एक ब्रॉड डेमोक्रेसी में लोगों को सुना जाता है, लोगों को समझा जाता है. जब आज के टाइम पे यू आर इवन ट्रीटिंग एज एक्स चीफ मिनिस्टर्स क्रिमिनल्स, तो लोग किस पे भरोसा करेंगे? तो ये वे फॉरवर्ड जो है, मेरे हिसाब से तो बड़ा एक ऐसा सवाल है जो कश्मीर में हर कोई डिस्कशन करके हंसेगा इस चीज पे. तो क्या बचा क्या हमें? आप सबसे पूछना चाहता हूँ. अब कश्मीर की बात होती है तो इट्स रियलिटी कि वो एक तो कश्मीर में आके पहले इनको कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, रही है,
अब उनकी सैलरी बंद कर दी गई, उनका वो रहा है कि अब कम से कम सैलरी तो देखो, जान पहले ही खतरे में। कश्मीरी सिखों की बात होती है तो हमने ये 3 जनरेशन जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपको, जो मैंने बताई, ये तो एज अ कश्मीरी मुस्लिम जिससे आप बात कर ली, एज अ कश्मीरी सिख, एज अ कश्मीरी हिंदू, ये सबकी बर्बाद हुई। और आज लोग डरते हैं भी इन्वेस्ट करने में कि अगर हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, देयर इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर। बीच में क्लेम कर लिया 19 में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, 6 महीने घर में बैठिए, आज कुछ ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं यंग की हर बात में हामी भरता हूँ, और उससे ज्यादा हामी मैं राणा साहब की बात करता हूँ। जब वो बोल रहे थे तो मैं जोर जोर से चल रहा था, क्योंकि उनका हर सेंटेंस रेजोनेट कर रहा था मुझसे। क्योंकि वो सिचुएशन अपने मन से तो कश्मीर की बयां कर रहे थे, मगर मेरे को अपनी याद आ रही थी। मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ हूँ और बहुत कम अपनी ईसाइयत की झाड़ लगाता हूँ। 1 2 3 कभी कोई आरएसएस का आदमी किसी ईसाई को मार देता है तो उसकी विधवा कहती है आके दुआ करो, तो मैं ईसाई बन जाता हूँ के लिए। उससे ज्यादा पर मेरा नहीं है। मगर जो आप कह रहे थे, मेरा एक दामाद है वो मुसलमान, तो जो भी आप कह रहे थे हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ। और इसी वास्ते मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ी हंसी भी आई जब आपने कहा कश्मीर को एक माइनॉरिटीज कमीशन चाहिए। तो भाई साहब इसको तो फौरन विड्रॉ कर दो, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन जो हिंदुस्तान में है वो कौमों को लड़ाती है, उसमें अभी भी कोई ईसाई नौमनता नहीं है आज की तारीख में भी। उसमें ध्यान नहीं आ रहा कि पहले जब हम यंग थे तो सारे प्रधानमंत्री, सारे प्रेसिडेंट, सारे गवर्नर, पूरे विश्व के सारे प्रेसिडेंट के नाम जबानी याद थे। अब यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन में माइनॉरिटी होते हुए मुसलमानों का कौन नुमाइंदा है, मेरे को नाम याद नहीं है। अकाली दल का नुमाइंदा वहां पर जो आजकल बीजेपी में है, चेयरमैन है, उसका मेन काम है पंजाब में सरदारों को मुसलमानों से और ईसाइयों से लड़ाना, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो आप, मैं एक छोटे से माइनॉरिटी रोल में कह रहा हूँ, इस डिमांड को तो आप मानेंगे, और जो डिवाइसिव फोर्सेस गिनी गई है उसमें एक और आ जाएगी। तीसरी बात है कर दिए और भी ज्यादा कर दिए हिंदुस्तानियों के लिए। इसमें मैंने जिक्र किया 1 सेकंड के लिए अपने दामाद का, मेरे छोटे मरूम भाई का चौथी बेटी का पति है, मलयाली है, बस जैसा केरला का है, मगर मुसलमान है। इस्लामोफोबिया को मैं हर दिन चाहते हुए हर मिनट महसूस करता हूँ। हिंदुस्तान का जो इस्लामोफोबिया है और जिस तरह वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, उसमें जो आपने कश्मीर के अंदर गिनाए, पाकिस्तान, एक्सटर्नल टेररिस्ट, इंटरनल टेररिस्ट, आर्मी, ये सब जो पाए, उसके अंदर एक और जोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में बढ़ता हुआ गंगोर सॉलिडिफाइंग इस्लामोफोबिया। उसके रहते अगर आपको स्टेटहुड भी मिल जाए, जिसकी मैं फौरन यहाँ पे डिमांड करता हूँ, आपका स्टेटहुड बाकायदा रिस्टोर होना चाहिए जैसे पहले था, इंक्लूडिंग लद्दाख क्यों वाला मुझे किया जाए, उसको मैं इमीडिएटली सहमति करता हूँ। मगर जब तक पाकिस्तान तो एक है ही, जब तक इस्लामोफोबिया भी प्लेयर नहीं हटेगा तो क्या होगा हमारे ऊपर। और मैं अपने आप को मुसलमानों के साथ खड़ा करता हूँ। कश्मीरी पंडित के हालात, उसके दुख को लेके एक आध चाबुक हम पे चल जाता है। यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ सरकारी नफरत, और उसको कहने में कोई हिचक होनी नहीं चाहिए, बाहर जाके पकड़े नहीं जाएंगे। उस नफरत के अंतर्गत कश्मीर को भी हम देखेंगे। अगर उस नफरत से बाहर देखेंगे और सोचेंगे हिंदुस्तान में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका कोई हिंदुस्तानी वर्ड नहीं है, सब हंकी टोली है, और सिर्फ कश्मीर में बाकी इश्यूज हैं, तो शायद पूरी बात हम समझ नहीं पाएंगे। यही मैं कहना मांग रहा था। उस वक्त कहता तो शायद पॉइंट बात होती, और अभी भी ऑन रिकॉर्ड कह रहे। Thank you very much. Please announce your name. चंद्र विकास।
धन्यवाद। मेरा नाम चंद्र विकास है। मैं ईश्वर दास की दुनिया करना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले मैं लगातार संपर्क में हूँ और बहुत प्रेरणा मुझे है मीडिया जी से। और इस विषय में चार चीजें जो एक तो भूमिका रखी थी कि थॉट प्रोवोकिंग सेशन, और इसके साथ साथ जी ने बात रखी थी कि अपनी समस्या कम्युनल नहीं है, वो पॉलिटिकल है, साइकोलॉजिकल है। कश्मीर को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि एक आइंस्टाइन को एट्रीब्यूट किया जाता है कि प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट द लेवल ऑफ थिंकिंग एट व्हिच दे आर क्रिएटेड। तो कश्मीर की अगर स्टेटहुड छीनी गई तो आपको अधिकार है कि पूरी दुनिया के जितने भी नेशन स्टेट्स हैं उनकी जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सॉवरेनिटी है वो कौन से इंसानियत के कानून के अंतर्गत आके आप ये सवाल उठाइए। अगर कश्मीर को तोड़ा गया और जैसे कपिल जी बता रहे थे कि जो सैकड़े जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो रिचुअल्स हैं, जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं कश्मीर की, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, तो इसके बारे में ग्लोबल इंडिजिनस मूवमेंट, और मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, मैं ग्लोबल इंडिजिनस एक्टिविस्ट हूँ और संयुक्त राष्ट्र का जो मूल निवासी अधिकार घोषणा पत्र है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन फॉर राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ डॉक्टर एरिका आइएन डाइस ने 2007 में ये घोषणा पत्र यूनाइटेड नेशन असेंबली में नियरली यूनानिमसली पारित हुआ था। इसमें इंडिया गवर्नमेंट भी सिग्नेटरी है। और अगर कश्मीर की स्टेटहुड पे सवाल है, अगर छीना गया, तो आप इंडिया की सॉवरेनिटी पे सवाल उठा सकते हैं, आप चाइना की सॉवरेनिटी पे सवाल उठा सकते हैं, आप पाकिस्तान के सॉवरेनिटी पे सवाल उठा सकते हैं, कि ये सब सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। कोई नेचुरल लॉ, कोई भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का ये पूरा का पूरा वायलेशन है। जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन फॉर राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल बहुत क्लियरली कहता है कि अगर कश्मीरी, चाहे वो किसी भी कौम के हों, अगर वो वहाँ के इंडिजिनस हैं, तो उनको अपने पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनको अपने कल्चरल राइट्स हैं, अपने एजुकेशनल सिस्टम, अपने हेल्थ केयर सिस्टम, अपने लाइफ स्टॉक, अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस, अपनी इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, सब पे अधिकार है। और अंतिम बात, मैं सिर्फ इतनी सी भूमिका के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मैं ऐसे कई सारे 4 आवर सेशंस अटेंड करता हूँ, पर जब समस्याएं बहुत क्रोनिक हो जाती है, बहुत नासूर समस्या हो जाती है, तो 5 मिनट में समाधान देना कभी भी संभव नहीं होता। पर अगर मेरी बात इतनी थॉट प्रोवोकिंग लगी कि अगर आप मुझे मौका देते हैं, मनोज झा जी भी बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियंस के पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि संसद ही अवैध है। मैं तो इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे मेरा कोई सिग्नेचर ही नहीं है, कोई कंसेंट ही नहीं लिया गया। तो इसलिए मेरा सवाल ये है कि कश्मीर को जोड़ने का, कश्मीर के स्टेटहुड, स्टेट इलेक्शन का कोई भी समाधान नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कश्मीर ही नहीं पूरी दुनिया को तोड़ने की एक पद्धति है, स्थानीय लोगों को लड़ाने की डिवाइड एंड रूल का एक इंस्ट्रूमेंट है। स्टेट इलेक्शंस आर नेवर एन आंसर। थैंक यू। Yes, and then Respected Shah साहब, झा साहब, झा साहब और हमारे दौलत साहब, बाकी सभी हाजिर दोस्तों, काफी हमें कम से कम 10 से लगे हैं इस हाल में पहुंचने भी, और लगातार हम बातें कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम और उसका वे आउट क्या हो, और बहुत सी बातें आ गई हैं। मैं इससे अब इस बात से जोड़ना चाहूंगा कि अगर जम्मू कश्मीर को हल ढूंढना है तो क्या इस नारे के साथ हो जाएगा कि 1 नेशन 1 रिलीजन 1 फ्लैग 1 कॉन्स्टिट्यूशन से हल हो सकता है जी? तो फिर जब प्रोपेगेंडा उसका हो रहा है और हम वोट उसको दे रहे हैं और नाच उस पर रहे हैं, तो फिर हल कहां से ढूंढेंगे? सवाल है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सभी एथनिसिटीज, सभी लैंग्वेज, सब कस्टम्स को फले फूलने का हक मिले इंडिया में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है कि ये रिपब्लिक है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, और जहां पर हर माइनॉरिटीज को बात रखने का या आइडेंटिटी को बात रखने का हक है।
हमारा हक जो है 47 से छीना जा रहा है लगातार। जैसे पहले हमारे सरदार साहब ने कहा कि हमारे पर तो एक स्टेजेस आ रही हैं और हम थोड़ी देर बोलते हैं फिर भूल जाते हैं, अगली स्टेज पकड़ लेते हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर को याद करते थे, फिर वो हम भूल गए, चलो चीफ मिनिस्टर ही सही, फिर वो भी छोड़ा। अब तो हमारे पास ये है ही कुछ नहीं है, हमारी तो कैपिटल सिटी भी कोई नहीं है। हमारा गवर्नर साहब अगर श्रीनगर से जहाज में बैठ के रास्ते में दस्तखत करते हैं तो वहां की स्टेट कैपिटल हो जाती है, और वहां से चढ़कर फिर वापस जाते हैं तो वहां दस्तखत करते हैं तो वहां कैपिटल हो जाती है। हम कहाँ जाएं? दफ्तर है कहाँ हमारा? हम कहाँ जाएं? हमारा दफ्तर ही कोई नहीं है। सुबह एक सेक्रेटरी श्रीनगर में होता है, वो बोलता है अब काम जम्मू में पड़ गया, वही सेक्रेटरी आकर जम्मू में दस्तखत करेगा, क्योंकि आधा दफ्तर उसने उधर रखा, आधा दफ्तर उसने उधर रखा। जनता कहाँ जाए? जनता के लिए तो कोई जगह नहीं है। इसलिए हमारे साथ तो बहुत धक्का हो रहा है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। वैसे तो मैं इंडियन पीपल का एक हिस्सा हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पेशल स्टेटस था, हमने घर से नहीं लिया था। दैट वाज गिवन बाय द फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट। जो यूनियन ऑफ स्टेट जम्मू इंडिया की बनी थी, हम भूलते भूलते यूनियन मिनिस्टर भी भूल गए। अब हम सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं, हम यूनियन मिनिस्टर नहीं किसी को कहते हैं। बेशक उसके बाहर लिखा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे, लेकिन हम कहते हैं केंद्रीय मंत्री। हमने खुद केंद्र बना दिया, यूनियन तो रही नहीं हमारी। किसकी यूनियन है हमारी? जम्मू कश्मीर किस यूनियन में? फेडरल में कॉन्स्टिट्यूशन 1 नंबर के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन 1 का आर्टिकल के तहत हम फेडरलिज्म में आए थे। वो कहाँ गया हमारा? इसलिए जब तक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं होता, जो जितना बना हुआ है, हम तो नया ढूंढ रहे हैं। आज वर्ल्ड में जो नई सिचुएशन आ गई है, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बदल गई है वर्ल्ड सारी। अब हमारे बॉर्डर्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इररिलेवेंट किए हैं यूरोप ने, और कुछ लोग अभी करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कर दिया, हम एक दूसरे को अभी गाली देकर जी रहे हैं, और फिर कहते हैं कि उसका नाम ना लो। कैसे नहीं नाम लो? मेरे घर के बाहर बॉर्डर है, वहां ड्रोन आता है और पता नहीं क्या फेंकता है, लेकिन सुबह हर घर में मिलिट्री फोर्स होती है, बीएसएफ। बताओ जहां पर पड़ा क्या था? वो कहते हैं हमें पता ही नहीं जी। बोलते नहीं, इधर पड़ा था, आया था ड्रोन। हमें पूछते हैं, वो ड्यूटी उनकी थी, देखा उन्होंने, वो भाग कर दिया, चला गया। और हमारे घर के बाहर जो बूटों के निशान होते हैं, बूटों के निशान होते हैं, वो देते हैं इस बूट वाला नया बूट आया, ये किसका है कर? वो कौन जवाब दे उसको? हीरानगर से लेकर करके अस्करदू तक हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है। वो लड़ाई का घर तो है। फिर कहते हैं हम बात का नाम का सफेद सफेद जीपे मेरे सामने घूमती रहती है, मेरे बच्चे मेरी भाई बहन पूछते सफेद जीपे क्या दूसरी रियासत में भी घूमती है? नहीं, हम कहीं नहीं घूमती है, हमारे में घूमती है। क्यों घूमती है? कि वहां पर झगड़ा है। तो जब है तो वो मान लेना चाहिए। और आज की वर्ल्ड की रियलिटी के तहत गन इज नो सोल्यूशन, किसी की भी है। मिलिट्री मेथड इज नो सोल्यूशन। जो यूक्रेन ने क्या हाल निकाल लिया है, और उससे हमारी भूख बढ़ रही है, और ये भूख सिस्टम देना चाहता है और हमें आर्म्स लड़ाई में फंसा कर रखना चाहता है। इसलिए हमें बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। जब हजारों आदमी जेल में पड़े हों, बात किससे की जाए? कहा जाए कि जम्मू कश्मीर का नॉर्मल आ गई है, नॉर्मल। हजारों यूथ जेलों में है, पता नहीं क्यों किस किस जेल में है। इंडिया की जेलों में, जम्मू कश्मीर की जेलों में नहीं, इंडिया की जेलों में है। और हम कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे हो गए। इसलिए ये गलत इंप्रेशन है। मैं सबसे कहूंगा कि जो एक साथी ने राय दी थी अभी हमारे कपूर साहब ने, जाकर जम्मू कश्मीर को जाए, वहां को दोस्त हमारी टीमें जानी चाहिए। मैं भारतीय लोगों का, अपने देश के लोगों का बहुत आभारी हूँ कि अगर हमारा ख्याल रखना है तो वहां आकर बात हमारी हो, हम वहां बैठे इस तरह। और फिर जा साहब जैसे लोग वहां पर आए, दौलत साहब भी आए, इन्होंने तो कश्मीर बहुत करीबी से देखा, और हमारे से वहां बात निकाल कर देखी जाए कि अर्बन कौन है, वाइट कलर कौन है, हाइब्रिड कौन है। ये शक्लें हमारी बदल दी गई हैं, इसलिए इनको शक्लों को हमें इंसान ही रहने दिया जाए। और हम इंसान हैं, और जम्मू कश्मीर में सबसे बढ़िया इंसानियत थी और सबसे बढ़िया कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन थी, उसमें हमारा कल्चर बहुत कंपोजिट था, तो उससे उसे बहाल किया जाना चाहिए। धन्यवाद। From university and then from Srinagar. Thank you, Chairman. The topic after hearing all these distinguished speakers, to me, it is very complex. Of course, the history reveal of that.
Personally, I come from Manipur. We have almost the same style of this thing that thing. But my visit to Kashmir in 1959 as a student, that impacted me very deeply. That's why today was eye-dropping. And but after that, fear to go back to Kashmir because so many things happening. And some of my friends were warning, don't go, don't go. Anyhow, my puzzle is Kashmir, Jammu and Kashmir. Out of the 28, 29 states, no state is called so A and B. Why this particular state, Jammu and Kashmir? What is the difficult to remove that end? To me, if it is out, I think it is one of the best states in this country, if I may be allowed to mention this. But there is a plebiscite of your agreement, disagreement, and then now we need to have two seminars. One, those who are speaking in English, like me, I do not know well words of English either, but Hindi is completely out of the question. So here is a very complex situation. And then another one is Please conclude. Another one is this is to be very frank, when dialogue comes with about the partition is that even now among you spoke three states, India, Bharat, Hindustan. Article 1, India, Bharat. Three names. These make me more complication. Clarify this with provision or something, some mandatory, something whatever may be imposed by the government. But and coming to this recent happening 370 during the pandemic period, this is totally inhuman. Why the elected leader be arrested and put to the case and then doing this thing that it's totally unconstitutional. So many things to talk about, but to me, one point and should be removed, or even not get one word only, one state, like any other 28 states. They don't know what is the peculiarity of this Jammu and Kashmir. It's sounded there is one area where full of gold and one zero sort of thing. So connecting lines on. This is making something to me to clarify this by both Kashmiri or Jammu or togetherness of one country. This is one of the most difficult, at least whether this can be broken up by nuclear weapon or what, I don't understand. Thank you. Please announce your name and then offer your comments. Friend from Ansari Saab, forward. And then Chopra Saab, be prepared to offer your comments. Yes. जुल्म का हर हुनर मुझ पे आजमाया गया, जुल्म का हर हुनर मुझ पे आजमाया गया, फिर भी जालिम मैं ही कहलाया गया, है ये अजीब दास्तां मेरी क्योंकि मैं ही तो कश्मीर हूँ. Assalamu alaikum, good afternoon everyone in the house, particularly to a person from whom I have learned a lot, respected Professor Manoj Jha. और यहाँ जो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन या डिबेट में कहूँगा, ओपी शाह साहब जो पिछले कुछ सालों से इसको लेके चल रहे हैं, द वे फॉरवर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. अगर ओपी शाह साहब को याद होगा, जब आर्टिकल को एब्रोगेट या डे ऑपरेशनलाइज किया गया था इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली, और उसके बाद जब पहला डिस्कशन यहाँ हुआ था, हमारे साथ यहाँ फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी के थे रियाज पंजाबी साहब. उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उस पर रोशनी डाली थी कि हम हमेशा ये बात कहते हैं द वे फॉरवर्ड. अगर 2019 5 अगस्त तक हमारे पास एक स्टेटस था, एक पहचान हमारी थी, और उस पहचान को अगर रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कहूंगा मैं खत्म किया जाता है, फिर अगर हमें कहा जाएगा कि द वे फॉरवर्ड ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. अभी यहाँ बहुत सारे हमारे जो रेस्पेक्टेड जो स्पीकर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि उसका ये सोल्यूशन हो सकता है, ये सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में मैं पिछले 5 या 6 साल में, क्योंकि मैं
पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, मेरी सारी रिसर्च जम्मू कश्मीर पे है, और कल को जो सुप्रीम कोर्ट में जो फंडामेंटल आर्गुमेंट्स पे डिस्कशन होने वाली है वो मेरा ही रिसर्च है। लेकिन काश कोई हमसे पूछता कि आपको पता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है। देखिए अभी यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब चला रहे हैं। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ना कभी थी न कभी होगी। प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर की, खासकर पर्टिकुलरली मैं कश्मीर की बात करूंगा, प्रॉब्लम ये है कि वहां कश्मीरियों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है न्यू दिल्ली पे। उसको बार बार खत्म किया गया, जो उनके पास था वो उनसे छीना गया। जो ट्रस्ट है उसके बाद अब स्टेटहुड पे आइए, उसके बाद अब आर्टिकल 370 पे आइए, उसके बाद अब बाकी चीजों पे आइए। मेरे फ्रेंड एक ने, रैना साहब ने एक बात कही कि माइनॉरिटीज के साथ बड़ा जुल्म हुआ। मैं ये खुद मानता हूँ, मैंने अपनी रिसर्च के अंदर इसका जिक्र किया है। 1990s में जो भी कश्मीरी पंडित के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। और मैं आज भी डटे की चोट पे कहता हूँ जिसने भी वो किया उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, 1947 से आज तक जो 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी नौजवान मारे गए, मासूम नौजवान मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? जो हजारों माओ बहनों का जो अस्मत रेजी की गई कश्मीर में, उसका जवाब कौन देगा? जब आप दिल्ली में बैठ के कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, जब आप दिल्ली में बैठ के बाकी माइनॉरिटीज की बात करते हैं, हम भले ही नाम के हम मेजोरिटी में है, लेकिन जब हमारी बात नहीं होती है तो कश्मीरी को अपने आप को खुद ही लगता है कि मैं तो इस मुल्क का ही नहीं हूँ, ये तो मेरी बात ही नहीं करता है। क्या इसने मेरे मेरा भाई जो मैंने खोया, जो गोली का शिकार हुआ, क्या इसने उसके बारे में बात की? क्या इसने उन माओं के बारे में बात की? एक इज्जत होती है माँ हमारी, एक बहन इज्जत होती है हमारी, जब उसके साथ अस्मत रेजी की गई, वो किसने की? वो बहुत सारे लोग डरते हैं। मैंने रिसर्च में भी जिक्र किया, मैंने टीवी डिबेट्स में बोला, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था वो, उसको असल में टेररिज्म कहते हैं। टेररिज्म का असल लघवी माने है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, असली माने है कि दहशत फैलाना। और कश्मीर में अगर कश्मीर अवाम में कोई दहशत है, वो स्टेट ऑफ इंडिया की दहशत है। जब तक आप उस दहशत को खत्म नहीं करोगे तब तक ये मसला ना हल होने वाला है, तब तक ना खून रेजी बंद होने वाली है। देखिए एक पॉइंट के बाद मैं फिनिश करना चाहूंगा। आप 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद एक नारा लगाता है कि स्टोन कटिंग खत्म, टेररिज्म खत्म। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहता हूँ, मनोज झा साहब के माध्यम से, जब भी आप अगली बार पार्लियामेंट में जाएंगे ये बात उठाएंगे आप, पत्थर मेरे पास रिसर्च भी है सर, मैं आपको रिसर्च भी प्रोवाइड कराऊंगा। पत्थर से मेरे पास कोई भी डेटा नहीं मुझे मिला पिछले 20 साल में किसी को पत्थर मारने से मौत हुई हो, लेकिन पत्थर को रिप्लेस किया गन ने, जिसको आज हम कहते हैं टारगेट किलिंग ने। और मेरे पास रिकॉर्ड इस वक्त है, मोर देन 50 पीपल गॉट किल्ड आफ्टर 2009, 5th of August 2009 बिकॉज ऑफ दिस टारगेट किलिंग। आपने कौन सी अचीवमेंट, आपको पता ही नहीं है। मैं कल को श्रीनगर में खड़ा हूँ, मुझे पीछे से आके कोई पिस्टल से फायर कर दी गया, यही आपकी अचीवमेंट है। और रही बात टेररिज्म की, मैं बार बार ये कहता हूँ, जब तक आप आम कश्मीरी का ट्रस्ट नहीं जीतोगे, जब तक आप आम कश्मीरी को गले नहीं लगाओगे, तब तक टेररिज्म जारी है। उसको कोई बंद नहीं कर सकता। अभी तक तो आपने हजारों कोशिशें की, क्या आपसे हल हो पाया? नहीं हो पाया। मैं बार बार ये कहता हूँ, गोली से कभी मसला हल होने वाला नहीं है, मोहब्बत से होगा या गले लगाने से होगा। थैंक यू सो मच। दिस इज आदिल नजीर खान। and then Dr. Salah after that. Thank you very much. मैं कोशिश करूंगा जोर से बोलने जोर से बोलने की ही जरूरत है। जोर से ताकत रही नहीं, वरना जब हम लोग वो बात नहीं है लेकिन दिल है। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा और उसपे मैं झा साहब हमारे पार्लियामेंट यहाँ पसंद करते हैं, मैं आपकी पहुंचे चाहूंगा। पिछले 1 घंटे में जो बहुत अच्छी सिचुएशनल असेसमेंट की है और तमाम तरह की बातें की है कि इलेक्शन होते हैं
तमाम बातों पे मैंने तमाम साथियों ने उसको रोशनी डाली है, लेकिन सवाल यही होता है कि जब एडोकेशन हुआ 5 अगस्त 19 को का उस वक्त गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में, और ये कहा कि इससे वहाँ करप्शन खत्म हो जाएगा, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी और वहाँ पीस डेवलपमेंट होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम किसी भी पैरामीटर पे अगर हम देखें, हालांकि फैक्चुअल पोजीशन जानना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन से आ ही नहीं रही है, लेकिन अगर आप वॉइसेस को अगर आप काउंट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें से जो भी तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो डिफाइन किए गए वो उसमें से कोई भी रियलाइज नहीं हुआ है, और ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक वाइट पेपर को होना चाहिए, इसलिए कि ये बात पार्लियामेंट में की है और बहुत जोर शोर से हुई है, तो देश के साथ ये बात हुई। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा जो एडुकेशन हुआ उसने तमाम चीज़ों को डिजाइन किया, यानी कि अगर आप देखिए जवाहरलाल नेहरू से लेकर के प्रोफेसर मोदी तक जो कहा कि गले लगाने से वहाँ की समस्या हल होती, और उनमें से किसी भी वादे हमारे जितने भी तमाम लीडरशिप ने अब तक नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको पेश करूंगा। हमने ये देखा है, एनालाइज किया है कि किस प्राइम मिनिस्टर ने या टॉप लीडरशिप ने अब क्या कहा है और किस तरह के वादे प्रोमिसेस कश्मीरी आवाम से किया है, और मैं समझता हूँ कि कहीं भी हम खड़े नहीं कर सकते, और इस तरह के जो नौजवान पॉलिटिकल साइंस के और लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, जाहिर है कि उन तमाम चीजों पर नजर डालेंगे तो वही बात कहेंगे कि हमारे तो शुरू से ही जो कभी तो मैं समझता हूँ कि पहली बात कि एक मौका है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ा जो हमने कानून का बड़ा कदम उठाया, और वो तमाम जो प्रोमिसेस जो चाहे हम में तय किए हों या हमारी लीडरशिप ने पाकिस्तान में जाकर कहा है या हमारे यहाँ पार्लियामेंट में, तो ये हमारे सामने है। दूसरी बात जो आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा देश नहीं इसकी जो बाउंड्रीज है वो अनडिफाइंड है, एलएसी हो चाहे एलओसी, और हमें दोनों जगह से काम चाहिए। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा पॉलिटिकल विल या डिप्लोमेटिक स्किल्स नहीं है कि हम अपनी ये रिजॉल्व करें, और ना करें तो फिर हमें चाइना से भी परेशानी होती है, पाकिस्तान की तरफ से भी होती है, और उससे जो है पूरी हमारी आवाम को इसे सफर करना होता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि पार्टीशन के बाद जो बांग्लादेश और इंडिया की जो बॉर्डर्स थे वो इसी तरह से बड़ी सिचुएशन में, आपको याद होगा कि यूपीए ने एक बहुत बड़ा कमीशन जो है इसके लिए इस्टेब्लिश किया, और जिसको बीजेपी ने तो 2003 में उस एग्रीमेंट में साइन किया, और हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ टेप्स जो है एक्सचेंज किए गए, और लोगों को मौका दिया गया कि जो बांग्लादेश जाना चाहता है वो वहां गए, और जो यहाँ यानी 60 साल के बाद ये और यहाँ पे कई साथियों ने कहा कि हमारा एलओसी जो है वो आज भी एक प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, वो अनडिफाइंड बॉर्डर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक सिंसियर कोशिश जरूर होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से कि ये हमारी जो बाउंड्री है, जो हमारी जो बॉर्डर्स है वो डिफाइंड हो, इसके बाद हम तमाम ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ पीपल और तमाम तरह की बातें कर सकते हैं। जैसा दुलत साहब ने कहा कि कश्मीरियों के दिमाग से पाकिस्तान निकालना है, लेकिन क्या पाकिस्तान से कश्मीर को निकाल सकते हैं उनके दिमाग से? ये दोनों चीजें जो है एक साथ चल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान ने किया और जिस तरह से वो तय किया है, फाइनलाइज किया, और दैट वाज द सेक्शन ऑफ बोथ द पार्टी, तो क्या इस तरह की एक्सरसाइज ठीक है आप चाइना से नहीं कर सकते क्या, लेकिन पाकिस्तान से कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पहल होगी और हमारी मसाइल जो है हल होगी। और लास्टली जिसका जिक्र आप लोग भी करते रहते हैं कि टेंशन विद पाकिस्तान, सर्वाइव इन कश्मीर, हेल्थी डिवीजन पॉलिटिक्स, तो इससे जब तक हम हावी नहीं आएंगे, इसलिए तो हम जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी कम्युनल हार्मोनी, चाहे वो वेस्टर्न इंडिया में हो, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वहाँ पर भी कम्युनल हार्मोनी की बहुत जरूरत है। तो वहाँ पे अक्सर इस तरह की बातें होती हैं। हमारी जब बात की तो वो हमसे ये पूछते हैं कि आपको हिंदुस्तानी मुसलमान हो, बताओ आर यू हैप्पी विद ऑल दैट गोइंग ऑन विद यू? तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के सवाल जो है अगर हम करते हैं तो हमसे उल्टा ही पूछ दिया जाता है। तो कम्युनल हार्मनी की सख्त जरूरत है, और ये बात इस्लामोफोबिया या और तरह की रेडिकलाइजेशन वगैरह की बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर में कम्युनल प्रॉब्लम से ज्यादा वो एक पॉलिटिकल इशू है, उस
रिजॉल्व करना ही होगा, और जब तक हम नहीं करते मैं नहीं समझता कि कश्मीर की बात हम बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Ansari Saab was interlocutor. Chopra Saab, would you be able to speak? If there is something wrong with the system. No problem. Oh, it has come. And listen very carefully. And I agree with some of the more clear-cut views of the people that the problem is not of Kashmir, the problem is of India. The problem is of a country where Kashmir was bought from the British. Before that also happened. I would take it back 10 generations back from me. There was a man called Israel who was murdered. He is my ancestor 10 generations back. Now I can tell you that is not the only thing. I'm going to mention that. I would say you go back then after that 4 generations back. 1919, after Jallianwala Bagh, Gujranwala was bombed by the British. We were from Gujranwala. And at that time, people came out and destroyed British buildings. They even killed some British people. My great-grandfather, at the age of 65, was charged at that time. And who do you think came to protect us? It was Chimalal, Gandhi's man at that time. And I can tell you that today it is horrifying. His great-granddaughter comes and stays in our house till this day. I can tell you that at that time, had Setalwad's report not exposed imperialism, my great-grandfather would have died and maybe none of us would have been born. So I can tell you, I owe my birth to the struggle of Kashmir. And therefore, I will only close with one thing. I remember Punjab and Kashmir. I remember how many of our people were killed in Punjab. And one thing I noted, that in Punjab, it is the agricultural labor that comes from Bihar. And even Guru Gobind Singh was born in Patna. He died in Nanded. Now, what you understand is, when I was in Punjab, people told me, Punjab bhi bahar ja sakta hai. I said, kuch nahi jata. Jinki roti rozi kisani ki hai, khet mazduri bihari ki hai, wo Hindustan ka अटूट हिस्सा. मोहम्मद यूसुफ और मैं कश्मीर में जा रहे थे, मेरी मीटिंग थी. उधर Anand, sorry, there's a center of the car. Shakti Kak is from there also, and her husband John Cherian is a Keralite. And I'm sorry, because of COVID, all of a sudden names disappear. Anantnag. So we addressed a meeting. I was the chief guest there. There were 4,000 people. There was no problem. The odd thing is that I remember people fighting firmly at Anantnag. And only one thing gave me an answer. I was talking in Kashmir. और कश्मीर में होते हुए मैंने कहा हिम्मत मर्दान मदद खुदा. और कहीं मैं हिंदी का कोई और फ्रेज यूज कर सकता. हाँ, लोगों ने ये जवाब दिया. उससे मुझे पता लगा कि कम्युनलिज्म और रिलीजन नहीं है. It is a state that is doing something, and a state that should not do what it is doing. And we must defend ourselves as the Indian people
and Kashmiri people together. If what is happening in Kashmir is stated the way you're stating it, and I know it well, I can tell you it is not a communal thing only. There is only one gang of people running this communal business, and that is the RSS. All of us are not the RSS. Half my family is Muslim. Makes no difference. And I would say they will remain that in India, and the people of India must answer, and we will answer them like Voltaire, who said, I may not believe in what you say, but I am prepared to give my life for your right to say what you want. And that is where we go. Yes, please. Announce your name and speak for 3 minutes. My name is Shivan Shai. The mic is not working, but then I guess I'm. Oh, it's working. Problem is Hello. that Hello. I tell you, I am the president. Please. Yeah, that is all right. Please change your seat. Change your seat. What is there? वर्कल साहब थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए देखिए ये वर्क कर रही है You don't want me to speak, then I guess I should not speak. You can maybe no, Chopra Sahab, immense respect for you. Mr. Jai is there, one of the very few parliamentarians we love. We Kashmiris love, not just Shivan Shai, we Kashmiris love. That is the problem. I am the president of Jammu Kashmir People's Party, a party that was created not from either New Delhi or not from Islamabad. It was indigenously created post the abrogation of Article 370. You need to hear us out. I have come here because of immense respect we have for Chopra Sahab, for Jha Sahab and all the other esteemed guests who have shown that humanitarian side of the Indian society. We know the activists in India also. I'll tell you what is the focal problem in Kashmir, because the Indian democracy has failed in Kashmir. When in 53 you arrested Sheikh Mohammed Abdullah, who was the tallest leader of Kashmir and was a democratically elected leader, you pushed him behind bars for 22 years. The silence of the Indian society failed me at that time. People who are vocal for a pluralistic secular society in Kashmir, you fail us. Your silence fails us. Why the onus lies on people like Mr. Manoj Jha, people like Simranjit Singh Maan, people like Asaduddin Owaisi? Sir, I am here not because of any invitation, because some people in Kashmir still believe that there is a ray of hope left in India because of people like Jha Sahab. You don't understand the intelligence. The deep state in India don't understand the importance of such kind of parliamentarians. You have manufactured democracy in Kashmir, and so has Pakistan. We are equally against them. They have pushed up their legis. These governments, every election from 53 to 75, it is a blot. When we teach our children what has happened in Kashmir, from 53 to 75, every election was rigged. And what happened in 87? It was a big slap on the character of subcontinent. Why can't we get out of this mindset? We have such close proximity to China and Japan. Nations are moving leaps and bounds, and we are caught up in the Stone Age. Why? Because these countries are not able to discuss all the issues, and my people are caught in the quagmire. I want to make this amply clear. When Kashmiri Pandits were targeted whole night, it was the first protest in the struggle of Kashmiri Pandits. I don't need this certificate of secularism from anyone. I will tell you where the problem lies. The problem lies with New Delhi and Islamabad. They think they can prop up their nuclears. They can create modern day Bakshis. They can delegitimize the leadership of Kashmiris by propping up bronies. You will never be able to silence the real voice of people of Kashmir. You want to tell me what is the way forward, sir? To find out the way forward, you first have to address what has happened in the past. Clock has to turn back. Every time Delhi tells us the clock cannot be turned back. You go ahead, commit a catastrophe, and you damage and destroy our society. You damage the syncretic culture. Why are the Pandits being targeted? You were rightfully saying the Pandits were never targeted. Some of them, I have met them personally.
They had no security even in Pulwama and Anantnag. When I went to their home, 3 Pandit that was assassinated. I have personally met because I believe in a pluralistic society. I believe we have got this as a lineage, as a heritage. ये हमारा नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास का हमारा नारा था, हम उसमें बिलीव करते हैं, हमें वो लेसन किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। मगर आपने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत ये है सर कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस जहनियत से निकलना है कि everybody is up for sale. Dawlat Saab once said, he told the Kashmiri leaders, Indian rupee is as good as the Pakistani rupees. They were also buying them, Pakistanis were also buying. And one fine day, the article of faith, I want to address all the people here. The article of faith, which defines the relationship between India and Kashmir. You have destroyed my legacy over there. What am I going to tell my people? Tomorrow you will come up and prop up another crony. Now you have Altaf Bukhari. He is being funded from BJP and government of India is supporting him. How can the security forces, when I came to Delhi, it was on my agenda to meet people like Jasa. Security forces are interfering in the electoral process. They told me in North Kashmir, a brigadier was saying, what is left then, sir? What lessons are we teaching to our younger generation? How many more generations have to be destroyed? The clock has to turn back. It has to rightfully turn back. By 75, you cannot undo what happened in 53. You will have to address the real issue. And the issue is between the people of India, Pakistan, and Kashmir. And you have to understand, generations are suffering. We have become third world people. We are all first world people living in a third class setup because we don't allow the good people to come forward. Stop manufacturing leadership. Leader cannot be made. It cannot be dictated. You cannot dictate us who will be the leader of Kashmir tomorrow. This is the biggest problem. You have to grab the bull by the horns and you have to tell people everywhere that we believe in the democratic setup. But did you allow the democracy to flourish ever in Kashmir? I just a minute more, if you really want any suggestions. Believe you, I would not have participated in this conference. This might be my first and the last time. I hope so, not the last time. That depends upon the attitude of what Delhi does. No. That is all right. I am here. I am telling there is no government. They had no idea what is going to happen post 2019. Mr. Tulat will know. They had no idea what is going to happen post 2019. I was in Delhi post the abrogation. I met Jasab also. It is because of people like him that today there is not widespread carnage in Kashmir. It is because of people like him. In him, we saw that hope. In Asaduddin Owaisi, we saw that hope. In Brinda Karat, we saw that hope. When in Jahangir Puri, she went in front of that bulldozer, she showed us, no, India is still alive. The spirit of India is still alive. I sent her the message that very night, that madam, you are an inspiration for people like us. Youngsters need that path. Kashmiris hate India, but why do they love Manoj Sinha? Why do they love Sajib Bhatt IPS? Why do they love Asaduddin Owaisi? Why do they love Brinda Karat? This is the answer the deep establishment in India has to understand. Stop manufacturing. Your cronies cannot represent anybody in Kashmir. They don't represent anybody in Kashmir. That is why when you one fine day you decided to push all of them behind here, nobody came out. Rightfully so, because it was your manufactured leadership and nobody accepted them in Kashmir. If you really want to move forward, I have come here with the intention to tell you all, to tell Chobra Saab, to tell Jasa, that tomorrow they will force me to pick up the gun. Believe me, they will push me to that level that I'll be forced. And you look at our background. I come from a family of bureaucrats. I come from a family of politicians. The rightful political heirs of Kashmir, not those manufactured by Islamabad or by funded from IB or RAW or from ASI. The thing is, you will have to give Kashmiris a platform to vent their anger. They require a representation, as the madam rightly said. My people are suffering. They have nowhere to go. They have no shoulder to cry on. For menial things, you won't believe I have to call your fellow parliamentarians and tell them, please get my children out of all these jails. If somebody from BJP calls, everything is done. How can you be so partisan? What example are you setting? You are telling me I am not an Indian. Did you ever allow me to become an Indian? A, I am a Kashmiri. B, I am a Muslim. You never allow us to become a part of this society. Am I responsible for that? Khajuria Saab is there. I am so proud of our elders that we have this culture. I've been in all the Indian cities. Just give me 1 minute more. I've been in all the Indian cities. Believe me, we have this thing of undermining our own people. But Kashmir, I've never seen secularism, that kind of secularism. In Jammu, in our Dogra brothers, you have leadership. Charak Saab is there. Mr. Sunil Dimple is there.
you are having this round. For the love of God, I have come here to tell the people of India not to address any conference. We are not your enemies. But they will make us your enemies, like they made the young boys who are part of Plebiscite Front. JKLF was a part of Plebiscite Front. When my elders, no, just please, let me just add, I have come from Srinagar just to address this conference. Because you have no idea, sir, what is happening on the ground. You were there just for a wedding, what we see every day. I want to tell Mr. Dullat, is there no space for Kashmiri Muslims in India? Is that the truth? Why don't you speak to us then? Then you should also pick up guns and we should also pick up guns and decide it on the battlefield. Then there is no place left for civility. If we have to stop playing all these Mephistophelian games and understand that our people are suffering because of that. If in Kashmir, people are dying, it is having a direct impact. I consider Dalit brothers, Chandrasekhar is their leader. What is he saying? What is the brass tacks? We all want justice. We all want you to have a little heart and be emancipative and give us some space that you are not giving to anybody. If you really want to do anything, please, I want to give you 3 suggestions. First is to send an all-party delegation immediately to Kashmir. Second is to please, to all the people here, it is not only when Ziaul Haq hanged Bhutto, the order came from the Supreme Court of Pakistan. If you want with all respect to the Honorable Court, I am not worried about contempt or anything, but deep down, we all know what is happening today. If the institutions lose their credibility, where does the state go? These are shrieks of anger and these are shrieks of pain from Kashmir, that you should understand 1,000 kilometers away from you what is happening on the ground. I have seen, I feel this pain every day. And I hope so people here, I have witnessed the cream of the Indian society. And I know there are people like me and you. They have a human heart. But why aren't they feeling for the Kashmiris? 3 years have passed. More than 4 years, BJP has been running a proxy government. And nobody bats an eye. We should have more conferences like this. But we should really take to the streets and impress in the parliament in the coming session. I would request Manoj Jha, and I would request other people also in their limited capacity. They should speak to the establishment. You are, Mr. Dullat Sahab, with all respect, you are pushing the Kashmir. Believe me, guns would have blazed and skies would wreak fire for 2019. Thanks to some of your parliamentarians. They have this heart. They have love for Kashmiri. They have empathy for Kashmiri. That prevented that catastrophe. You can take it from me as an authority, and you can confirm it from your sources. I am telling you very responsibly, skies didn't yield that fire because of people like Manoj Jha, because of people like Asad Owaisi. We believe in the democratic structure, but please allow democracy to flourish in Kashmir, and you will have to address all the outstanding issues. I am friends. They tell me I am an anti-national. I have more friends than Narendra Modi in India. You have to accept. I am friends with Dalits. I am friends with the people of the Northeast, with Bengali, with Tamil. No. Please complete it. So you will have to understand the basic problem is that you will have to give Kashmiris their democratic space. So, friends, we have another 40 minutes. At 4:30, I have requested him to speak 5:15. 5 o'clock till 5 we will have the session and then take a cup of tea. Some of you would like to. So yeah, I see how many hands. Oh, you may have. मैं एक request करना चाहूँगा sir. Oh, many. One small now, it's request. possible. Please. Just few seconds. Please. You have already spoken. No, I'm not speaking for myself. I'm just asking you for a simple thing that, venting out anger is very respected and all our empathies and compassion is there. But if the session topic is way forward, then the hat that you wear when you are venting out anger is very different from the hat you wear when you are working towards solutions and win-win. So please draw a line, at least leave last half an hour for solutions. Thank you. Thank you. Now we have, you have to remember, and would you like to listen to Professor Jha? Now we will have 5 speakers of 2 minutes each, so that we have time for Dullat Sahab. And yeah, now let's begin with the distinguished lady.
All my empathy with all the people who have, been venting out all their sorrows. My name is Dr. Mona Verma. I am a third generation Kashmiri. I was born in Kashmir, but since 1964, because there's been so much garbad jhala, we have not been able to live there, and we sold all our property and moved to Delhi. So you must realize when you talk about Kashmiris and Kashmiri Muslims and Kashmiris whatever, there are a lot of people who've been thrown out, and they're also part of the Kashmir Janta. I've been working in New Zealand for the last 20 years. I have met a lot of Kashmiri Pandits who had worse than Bari than Mr. Mir has. And this lady here said that targeting Kashmiri Pandits was a new phenomenon. Well, they've been there for 20 years. And if you had heard that Bari Khanis and the Zyadati and the Zulm which they had, you would be talking a different story. Now I have just one more point to make, and that is about Article 370. I think it was a great move by the government because the previous Kashmir state was a highly sexist state. अगर कश्मीर की कोई बेटी शादी करती थी बाहर, उसको देश निकाला दिया जाता था. ये किस किस्म की डेमोक्रेसी थी, किस किस्म का जस्टिस था, किस किस्म के लॉज थे. मेरी मदर कश्मीरी थी. She went and married somebody outside, and since then किसी को कश्मीरी स्टेटहुड नहीं मिला. So जो अब turn the clock backward बोल रहे हैं, that was not democratic, highly sexist, unconstitutional, and against the Uniform Civil Code. जब से Article 370 आया है, the Uniform Civil Code has been implemented. All the women in Kashmir have equal rights, but I don't see them here. I only see 5 ladies. Okay, please कुछ बोलिए. Number 1. Number 2, कश्मीर में secularism आया है. अब माने या ना माने, आया है. Everybody has a right to go there. I can go back and buy a houseboat if I like. Number 3, आप कहते हो फिगर्स नहीं है. मैं डॉक्टरों में सिर्फ मेडिकल फिगर्स देखती हूँ. कोई 10-15 मेडिकल कॉलेज खुल गया कश्मीर में. एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है. 2 तो वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है. So there is a health service coming up. What are you talking about? Those are the only statistics. No, man, ऐसा कुछ भी नहीं है. No. बोलने दो वो उनकी समझ है, बोलने दो. I will respect the other ladies to please. राजा को कहा था आर्टिकल 370 की वर्षों के लिए लाया गया. तो Please. Yeah, complete your. Mr. Chairman, Just a minute. I think that we have opposing viewpoint that they should not be. Yeah. Agree. No, not at all. We don't want this. You don't have the courage. Listen. Well, we have what we are actually wrong. We didn't say anything. Speak through me. Tell me one. Please, no. Who do you want to tell me? She said about 8 medical colleges. Who gave them? Please. It's Congress government, not BJP. Let's not talk about which government they have. There is medical college. Wrong. Okay. This is not Congress BJP. Listen everything. But Please. I understand it's not unexpected. When we have different point of view, there is some amount of anger. I can understand that. Sir. We have, but 2 minutes. Yeah, please, because then others will not get a chance. आप बस अपनी बात को मैं समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जो दर्द है वो मेरे नौजवानों ने हमारे और खासकर जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे दुलत साहब और काक साहब ने बड़ी क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल इन कश्मीर. ये एक चीज हमें ये तौसर लेना चाहिए. और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से ये जिक्र आया है कि हमें कश्मीर में जाना चाहिए लोगों को, और वहाँ पे बहुत वर्स्ट सिचुएशन, हमारी इकोनॉमी, हमारा कल्चर, एवरीथिंग इज बीइंग एबॉलिश्ड एंड बर्बाद किया जा रहा है. सब डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है. कोई बोल नहीं सकता है. हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको जेलों में डाल दिया गया है. और जो ब्लैक लॉज है जिसका जिक्र खुद इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लोग कर रहे हैं, ब्लैक लॉज का बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है. तो मैं ये कहूंगा कि सीधा मैं आऊंगा कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. जो वे फॉरवर्ड है, मेरी सबसे पहले ये गुजारिश है कि जो 2019
2019 की जो पोजीशन थी वो बहाल होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और इसके लिए मैं ये कहूंगा, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, मैं मिनॉरिटी का एक आदमी, मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ये इसका सर्वे करवाया जाए पूरे जम्मू कश्मीर में। आज 80% से ज्यादा लोग जो है, जम्मू के लोग जो है, वो रो रहे हैं कि भाई हमारी जो वो सिचुएशन है वो वापस आनी चाहिए। और जिसकी निशानदेही शाह साहब ने पार्लियामेंट में किया, और हम बार बार इनकी तकरीर को सुनते हैं और हमें इन पे फख्र है, ऐसे ऐसे हिंदुस्तानियों पे हमें फख्र है। और मेरी ये गुजारिश है, दूसरा वहां पे एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए कि वहां पे ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, हमारी डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है। और बिल्कुल, और सबसे खतरनाक चीज जो है जम्मू कश्मीर में, जिसका भी जिक्र आया है कि वहां सोसाइटी को डिवाइड किया जा रहा है, वहां जो एक नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है, इसके लिए हमें कौन इंसाफ देगा, ये कौन देखेगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि जो अजीम हिंदुस्तान के लोग हैं, जो अजीम हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको आज कश्मीर में जाके ये कश्मीरियों का दर्द और जो आज सिचुएशन बनी हुई है, इसको जाके देखना चाहिए। और कश्मीरी ना टेररिस्ट है, और कश्मीरी जो है वो अमन चाहता है। और खासकर जैसे बात आई है कि इधर की एक मेरे भाई ने बहुत बात की थी, मैं जरूर करूंगा, सिटी सिंहपुरा की। हमें आज तक ये बताया गया कि सिखों को किसने मारा है वहां पे, हमें आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। और जिस तरह चांदी साहब ने की है कि 2019 के थोड़े पहले और बाद में सब कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, इन तमाम चीजों पे हम चाहते हैं कि जिस तरह जुलिया साहब ने कहा है कि इट वाज यूनियन ऑफ स्टेट, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को बचाया जाए, which has failed in Jammu and Kashmir, उसको बचाया जाए। हमारी जो 5 अगस्त 2019 की पोजीशन है उसको बहाल किया जाए, हमारे ह्यूमन राइट्स बहाल किए जाए, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को रिलीज किया जाए। और मैं समझता हूँ उसी से अमन आएगा, तभी डेवलपमेंट होगी। थैंक यू। Ajay Singh for a minute and a half. He's from Jammu, practicing lawyer. I'm not even going to take a minute. I'll be briefer because I want to hear Jasa. I just want to mention one additional fact which I think nobody's mentioned. Recently, there was an appointment of the Standing Council for the state of J&K. I don't think it's the state of J&K, but for J&K in the Supreme Court. This is an individual who's less than 30 years of age. I don't believe the person hails from J&K. And the person doesn't happen to be an advocate on record. An advocate on record is a person who can actually file a case, make any filing before the Supreme Court. So this person doesn't even happen to be an AOR. He's not even 30. And yet he is the standing counsel for the state of J&K, basically essentially meaning he's representing the people of J&K. So just this one fact I wanted to highlight. Just I think everything's been covered by people far more knowledgeable than me. Thank you. Of the iceberg. Yes, Ghulam Nabi Saab, businessman, writer, and activist. आप सब लोगों को मैं सलाम करता हूँ साहब से, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनसे पूछता हूँ जब एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, सारे स्टेटों को आप यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं बनाते? दूसरी बात, महाराजा कश्मीर से हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स को सीखना था, 370 क्यों लगाया? आज मेरी 2 साल से ये डिमांड है, हर हिंदुस्तान के कैपिटल में 370 लगाया जाए। क्यों? आज हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला दिल्ली गैस चैम्बर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बोला दिल्ली गैस चैम्बर बन गया। मेरा जवाब 2 साल पहले था, पार्लियामेंट के इर्द गिर्द 50 किलोमीटर 370 लगाओ, मल्टीनेशनल कोई बिल्डिंग मत बनाओ। ये सीखना था आप लोगों को महाराजा कश्मीर से, ये करना था कलकत्ता में, ये करना है लखनऊ में, ये हर कैपिटल की सिटी को 370 लगाना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन सियासत फेल हो गया, ये सिर्फ खरीद फरोख्त में चल रहा है, बाकी कोई सियासत अखलाक किरदार का कोई इसमें नाम निशान नहीं है। तो जितना जल्दी है आप ये ठीक करोगे तो ठीक, तो पूरा मुल्क मुस्तकिल खतरे में है, कश्मीर तो क्या बात है। दूसरी बात, अब ये हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान नेताओं के हाथ में नहीं है। शुरू से इनको देख जब लगता है कोई माल अभी बिक नहीं रहा अमेरिका फ्रांस का, वो कहते हैं माल का खरीद फरोख्त शुरू हो जाए। आपके सामने यूक्रेन है,
वो बोलता माल ले लो, जितना ले लो, बिल साथ में है, हम नहीं आएंगे, माल ले लो। यही हशर हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ पिछले 50 सालों से। एक दो बात है, जब मुझे एक दोस्त रहता था कालका जी में, पड़ोसी डॉक्टर बाली, उसका भाई आईजी बाली था कश्मीर में, फर्स्ट आईजी। तो जैसा भी बड़ा सुनने की बात है, उसने मुझे कहा, मैं जब जवाहरलाल पंडित नेहरू को मिस्टर बाली अपना कश्मीर का रिपोर्ट देने आया फाइल, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ आ जाऊं चाचा नेहरू को मैं भी देखूं। तो उसने शेख साहब के खिलाफ कुछ रिपोर्ट लिखा था, बोला ऐसे नेहरू ने ये वर्क उलट लिए हैं। जब ऐसा देखा उसने, नेहरू जी ने बोला, ये फाइल उठाया और बाली को बोला, बाली तुम क्या बकते हो, शेख साहब के खिलाफ ये लिखते हो। बाली उठा फाइल लेकर भाग गया वापस। ये नेहरू का स्टेटमेंट था। फिर जब अमेरिकन एम्बेसडर आया, मुलाकात किया श्रीनगर में, उस मुलाकात को कैसे पेश किया गया, जैसा उस मुलाकात को कैसे डेवलप किया गया, जो सदर को जिन्होंने तस्दीक किया वही आगे सामने 370 हटा दीजिए, उसको खोज कर लीजिए जरा, वो क्या हुआ था, क्या ये अमेरिका के कहने पर हुआ, कहाँ हुआ ये हॉल। सारा हिंदुस्तान जो है मेजॉरिटी के लोग, मैं हर तबके के लोगों से उठता हूँ बैठता हूँ, कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, बिहार या बिहार के लोग कश्मीर में हैं, इतने अच्छे लोग दुनिया में नहीं है कहीं। लेकिन जो फसादात करते हैं वो बेचारा अपना पेमेंट देते हैं, वो फसादी नहीं है। कश्मीर में ये जंग है, वो एजेंसियों का जंग है, और सारा हिंदुस्तान फेल हो गया उस कश्मीर को एतमाद देने में, जिसने 47 से 89 तक कोई क्रिमिनल फसाद, किसी सरदार का बाल बांका नहीं हुआ, किसी पंडित का बाल बांका नहीं हुआ, उठा के दिखाए कोई। 47 से जब जम्मू में भी फसाद हुआ, सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में आग लग गया। एक शेर कश्मीर का नारा चलता था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। तो बाकी आप संपत प्रकाश जी से जो आज कश्मीर की आवाज है, उससे सारा कहानी आप सुन रहे हैं। तो आप लोग हिंदुस्तान के बहुत छोटे से आप लोग फेल हो गए। मैं पार्लियामेंट में जैसे शेख साहब की तकरीर श्रीनगर सुनता था, ऐसे ही मैं चंद्रशेखर जी का तकरीर सुनता था। ऐसे आप जैसे कई लोग आज भी पार्लियामेंट में हैं, ये नहीं है खाली हो गया, लेकिन आगे और लोगों को मेहनत करना चाहिए। ये बहुत वैसे जिसको बड़ा शान से मैंने भी कहा, हमने पैदा किए बहुत दानिश्वर जमाने के, है ये जर्ख है जमी हमारी, फूल उगाएंगे और हम दम नहीं देंगे इस चमन के फूलों को। यहाँ चश्ती पैदा हुआ, नानक पैदा का नहीं हुआ यहाँ। मैंने आप लोग राम राम करते, राम मुझे मिला जब मैंने लिखा, राम नाम जपने वाले राम का तू काम कर, शैतान का तू काम कर, शैतान का तू काम करके राम को बदनाम न कर। सोहेली के माँ के कहने पर 14 साल वनवास किया, तू तो अपनी ही माँ के सर पे थापी मारता है, कांटे बोके क्यों उम्मीद करता है फूल पाने की। राम नाम जपने वाले राम का तू काम कर, ये कांटे सबको कल चुभेंगे, कोई जख्म भरने वाला नहीं होगा। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। कभी लोधी था, कभी बाबर आया, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आया, कभी बगैर हथियार महात्मा गांधी आया, जिसको सारा संसार सल्यूट करता है। लिहाजा उस कहानी को दोहराइए, सब लोग मिलिए और 360 मनोविद्या साहब बहुत ध्यान से सुनिए। दिल्ली में कहीं हमारे कश्मीर है, बिजनेसमैन मैं हूँ, वो दिल्ली छोड़ के गए, गवाह में इतना कैंसिल हो जाएगा सबको। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट इधर गिरद 370 लगाइए, कोई मल्टीनेशनल बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए। 50 मंजिल सफदरजंग के सामने हजारों गाड़ियां आ गई, यहाँ पोल्यूशन के अंदर नहीं। गैस चैम्बर बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर कहता है, गैस चैम्बर सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ।
इसी तरह कलकत्ता खूबसूरत सिटी है, लखनऊ खूबसूरत सिटी है, पटना खूबसूरत, बस जहाँ सब बचाए और पार्लियामेंट को गाजी गुलाम नबी कश्मीरी किस तरफ से बता दीजिए। ये हालात है हमारे मुल्क का। एक नज़म सुनाऊंगा, तकरीर सबने किया, एक बात सुनाऊंगा, एक कयादत मुस्तकम होता जिन कौमों को, आबाद रहती वो कौमें जमाने में, बिगड़ती कयादत जिन कौमों की, समाजें बिखरती है उनकी जमाने में, संभल जा चलाने वाले तू यहाँ, नहीं तो मिट जाते हैं निशान कौमों के, आदाब जिंदगी कौम में पैदा करे ख्यालों में, तो हजारों रहनुमा पैदा होंगे कारवां। Relive, salute या गलिव, either mix, either run, either die. अक्सर सुनने में आया, खासकर इस साल कहते हैं कि 1990 में ये पंडित्स के खिलाफ नारा लगा कश्मीर। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1995 है, शायद मुझे पता नहीं कि सच क्या है, मगर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, भले इस बार कोई पोस्टर हो या ना हो, मगर हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से ये जगह जगह पे, मगर इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखिए, चलो मान लें कि कश्मीर में ऐसे नारे लगे, पंडित के लिए ऐसा हुआ, आई शेयर द पेन, मैं वो काम नहीं कर सकता, मगर एटलीस्ट 3 ऑप्शन थे, यू इधर मिक्स, यू इधर डाई, यू इधर रन। हमारे लिए क्या है, नेशनल पीडीपी जैसी जमातें जिन्हें मिलने की कोशिश की, थ्रोन अवे, हमारी यूथ जो कश्मीर छोड़ के फॉरेन भागना चाहते हैं, पासपोर्ट नहीं दिया जाता, दे आर कैच्ड देयर। एक ही ऑप्शन है, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, वी हैव टू डाई। एंड इस सिचुएशन में आप वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं, जहां टोटल स्टैग्नेशन, हर एक चीज रुक चुकी है। कश्मीर की किस्मत होम मिनिस्टर का पेज है। होम मिनिस्टर का मानना आता है जनाब आज 15 साल इनको दे डोमिसाइल के लिए, होम मिनिस्टर का मन बदल जाता है, नहीं जी अब लैंड राइट्स से बचाते हैं। इन सिचुएशन में हाउ डू यू थिंक you will win the hearts of Kashmir? How you will win people of Kashmir? This is the real life challenge that I face. मैं तो घुटता हूँ, मतलब मैं तो लोकल हूँ, एक आम आदमी हूँ, एडवोकेट हूँ, मैं तो घुटता हूँ, मैं तो मतलब लीगली फाइट करने का भी नहीं सोच सकता किसी चीज के लिए। आई एम ए गवर्नेंस एक्टिविस्ट एंड रिसेंटली एक एसएसपी ने मुझे ऑफिस में धमकी दी कि अगर आपने आरटीआई किया तो हम आपको जयपुर भेजेंगे। दिस इज द your point. लास्ट सजेशन रह गई। आई नो कि the issue of the time For that, फिर इनको नहीं मौका this for actually everyone. This is last point जो मैं पर्सनली क्योंकि 2019 में भी देखा, तब इशू इंटरनेट था, आज इलेक्शन बन चुका है, so that's not the issue of Kashmir, we have to go beyond that. और सबसे जो मुझे जो अपनी सजेशन लगती है कि वो जो what's the issue, it's not in Kashmir, it's in India, it's with the people of India. और क्योंकि वो आपके सामने आया है जब बीजेपी जैसी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में 370 को हटाने का रखता है, when we accept, people of India accept, so that's the answer. Issue is not with Kashmir, that's with the people of India. Thank you. Yes, तो मैं तो बोल चुका हूँ, अब क्या कहूँ, बहुत कुछ सुना है। सबसे पहली बात तो यह है कि let me apologize if I have said anything wrong which has hurt anybody. That's not the intention ever. Otherwise I wouldn't come here. दूसरी बात, आप हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं शुरुआत करूं, तो आज मैं देखा उसका एक फायदा हुआ, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं साहब, वो जो मैंने बकवास की वो सुन नहीं सके, क्योंकि I take him to be the last word in Kashmir. He's a Kashmiri, he feels for Kashmir, he knows Kashmir. So, और जो भी उन्होंने आज कहा बिल्कुल सही था, हमेशा ही सही बोलते हैं। दो तकरीरें मुझे खास पसंद आई, एक तो आदिल साहब आपकी,
और एक आपका नाम नहीं मुझे मालूम, शिवान साहब, आपकी passionate, truthful, straight. That's how it should be. उसमें सिर्फ एक दो चीजें हैं. आपने कहा कि टेररिज्म वो टेररिज्म नहीं है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है. आदिल साहब, जब बंदूक आ जाती है ना, उसको फिर कौन चलाता है इसका पता रखना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए इसको मान के चलते कि बंदूक ही जो है वही दिक्कत है. ये बंदूक आनी नहीं चाहिए थी कश्मीर. जब से बंदूक आई है तब से ही हम देख रहे हैं कि कश्मीर को कुछ न कुछ भुगतना ही पड़ता है, कुछ न कुछ तकलीफ आ ही जाती है. तो मैं समझता हूँ आप ये बात मेरी मान लेंगे. शिवन साहब, आपने बहुत कुछ कहा. अगेन, आई एम नॉट इन डिसएग्रीमेंट विद एनी. पैशन अपनी जगह है, फीलिंग सेंटिमेंट अपनी जगह है, बट कुछ रियलिटी भी है. जब आपने बार बार एक बात दोहराई कि द क्लॉक विल हैव टू बी टर्न बैक, उसमें एक मुश्किल है. काश के क्लॉक 53 पे चली जाती. मैं आपके साथ, आई डोंट डिसएग्री, लेकिन जो चीज मुमकिन नहीं है उसकी बार बार मांग करना, वो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला. मैं आपको एक छोटा सी मिसाल देता हूँ. बहुत साल पहले जब मैं पहली बार यासीन मलिक से मिला तो उसने कहा कि आपसे क्या बात करनी है, हम तो आजादी चाहते हैं. मैंने कहा, मलिक साहब, आजादी तो मेरा बेटा भी चाहता है. अगर आपको आजादी मिल सके तो मैं आपके साथ नारा लगाऊंगा. हम क्या चाहते हैं? आजादी. पर उस आजादी को ढूंढिए जो हिंदुस्तान के अंदर मिल सके आपको. And here I must admit, some people have made this point. Unfortunately, the idea of India has taken a beating in Kashmir. It's unfortunate, it's sad, but it is a reality. Coming to Raina साहब, जो आपने सवाल किया पंतों के बारे में. सॉरी, मैं थोड़ा सा बोला था शुरू में, मैं पंतों के बारे में भूल गया. भूला नहीं, मैंने जिक्र किया था कि 15 तब टारगेट किए जा रहे हैं. But what I was grateful for was कि आपने कहा ये 32 साल से हो रहा है, शायद ज्यादा हो रहा है. तो ये चलता जाएगा, ऐसे ही रहेगा. मेरी बात मान लीजिए. कश्मीर की जो खूबी है ना, वो कश्मीरियत में है, और कश्मीरियत की जड़ आप हैं. जब आप उसको समझ लेंगे, जब आप उसको मान लेंगे. और मैं एक और बात कहता हूँ, मैंने मीरवाइज का जिक्र किया था. मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है मीरवाइज. अगर मीरवाइज साहब बाहर आके एक मूवमेंट शुरू करें कश्मीरी पंतों को वापस लाने के लिए, और उसमें बाकी कश्मीर के लीडर शामिल हो जाएं, तो दैट इज पॉसिबली द ओनली वे, द मोस्ट प्रैक्टिकल वे of getting Kashmiri Pandits come back, which they must come back. उसके बगैर न कश्मीर पूरा है, न कश्मीरियत पूरी है. Thank you very much, sir. Thank you very much. May I, on your behalf, request Professor Shah to offer his comments and take as many minutes as you wish, no restriction. Thank you. Thank you, Shah. There is self-imposed restriction because we are all talking about a people and a territory which is living under huge restrictions. थोड़ा बहुत हम लोग अपने ऊपर भी रख लें. मैं क्या कहूँ, दुलत साहब से लेकर के तमाम, मैं ऑब्जर्वेशन भी नहीं मानता हूँ, टेस्टिमोनीज मानता हूँ. राणा साहब की टेस्टिमोनी है, आदिल की है, दुलत साहब की खुद की है, और बाकी नीता जी की है. तो इतने सारे टेस्टिमोनीज जो कश्मीर के बरक्स अभी हमने सुने, वो सब सच है.
लेकिन रैना साहब की टेस्टिमनी और इस टेस्टिमनी और इन टेस्टिमनीज के बीच में जो ये थोड़ा फासला दिखता है ना, उसमें जरूरत इस बात की है कि इस फासले के लिए रिस्पॉन्सिबल एंगर है, दोनों ही तरफ गुस्सा भी है, एंजाइटी। और हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे कश्मीरी वैली में रहने वाले मुसलमानों की बात करें, सिखों की बात करें, पंडितों की बात करें, ये सब एक एंजाइटी प्रोन कम्युनिटी में तब्दील हुआ है। और इनकी एंजाइटी के लिए ऊपर वाला भगवान या खुदा जिम्मेवार नहीं, हमारे नीचे वालों ने ये एंजाइटी पैदा की। ये जो हिस्टोरिकल डिवीजन ऑफ हिस्ट्री भी जो हुआ, योर हिस्ट्री एंड माय हिस्ट्री, इसके पीछे भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और जैसे मैं एक कहानी, आप सबने नोवेला थी एक आर्ली स्टीवेंसन की, डॉक्टर जैकाल एंड मिस्टर हाइड, तो वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात थी कि उसके अंदर दो हिस्से थे। वो कभी एक बहुत अच्छा इंसान हो जाया करता था जब डॉक्टर जैकाल होता था, और बहुत गंदा खूनी इंसान होता था मिस्टर हाइड के रूप में। कभी कभी मुझे लगता है, लुकिंग एट माय ओन स्टेट, माय ओन कंट्री, neighboring countries, and some of the examples from the world, that states also have the tendency to have Dr. Jekyll and Mr. Hyde in them. तो जाहिर तौर पर कॉबेल्ट के लिए राज्य की जो अवधारणा है वो वैली के लिए नहीं है और वो नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है। मसलन मैं कश्मीर के बारे में बोलने से पहले अभी हाल में मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था। मैं कई साल पहले दीमापुर गया, शाम 6 बजे फौजी गाड़ियां, पुलिस के बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ने लगी, बाजार बंद। मुझे कुछ खरीदने की इच्छा थी, छोटी सी चीज, मेडिसिन को एक लेना था, बोला तो कल सुबह मिलेगा या होटल वाला कुछ इंटरनली अरेंज करे। तो ये जो वक्त भी बदलता है भूगोल बदलने के साथ साथ। अब दीमापुर का 6 बजे शाम या कश्मीर का की शाम, तो ये जो फर्क है ना वक्त और भूगोल का, ये स्टेट ड्रिवन होता है। इसके लिए हम एक दूसरे को जब तक दोषी ठहराते रहेंगे, एक दूसरे के साथ फॉल्ट फाइंड करते रहेंगे, यकीन मानिए आपको कभी वो पन्ना नहीं मिलेगा जो आपका साझा पन्ना हुआ करता था हिस्टोरिकली। कभी मैं राजा महाराजाओं के जिंदगी और उनके दौर को बहुत स्वर्णिम कभी नहीं मानता हूं, क्योंकि बाय ट्रेनिंग मैं थोड़ा वामपंथी हूं। तो मुझे हमेशा लगता है राजा महाराजा राजमहल ये सारी चीजें अय्याशों के लिए थी, उनकी विलासिता की चीजें थी, उनके उस तरह से बनी। लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि अगर कोई कश्मीर का एक साझा इतिहास था, शेयर्ड एग्जिस्टेंस था, उसके ब्रेकअप के लिए डोंट हेल्ड ईच अदर रिस्पांसिबल, फाइंड द कॉमन गाय और द सेट ऑफ गाइज हु इज डन इट, हु इज कंसिस्टेंटली डूइंग इट। यकीन मानिए मैं नहीं मानता हूं 2019 से पहले हिंदुस्तान में सब अमन से रहते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, खूब दिक्कतें थी साहब। लेकिन 2019 के बाद क्या हो गया ना, कि सच के पक्ष में खड़ा होना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, आपको डरा के रख दिया गया। मैं आपको बताऊं, सन 1956 में हमारे दुल्हन साहब वाकिफ हो गए, शायद आप में से कई लोग वाकिफ हो गए, जब 370 पे बहस हो रही थी, मैंने अपनी बात कहने के अलावा जयप्रकाश जी की 2 चिट्ठियां पढ़ी थी। एक उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और दूसरा उन्होंने इंदिरा जी को लिखी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और दोनों ही खत में कई सारी चीजें अलग थी, लेकिन एक मजमून जो कॉमन था, यू कांट होल्ड अ पीपल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जयप्रकाश जी को इसके लिए अरेस्ट नहीं किया गया, ना इंदिरा जी ने, जवाहरलाल तो खैर बहुत बड़े डेमोक्रेट, लेकिन आज की दौर में, और मैंने कहा भी पार्लियामेंट कि अगर मैं इस चिट्ठी के नीचे जयप्रकाश जी का नाम हटा के अपना नाम डाल दूं, आप कल सुबह तक, मतलब जलील तो आज शाम से ही करेंगे, आपके पास वो सारे चैनल्स हैं जो जलील करने के इंस्ट्रूमेंट है। अब हुआ यूं, मेरा कोई वश नहीं, पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करता था, उनको जाने का मौका मिला, मुझे नहीं मिला। तो पाकिस्तान में अब तो दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। 370 का मेरा वीडियो शायद पाकिस्तान के भी एक 2 टीवी चैनल में चल गया, अब उनकी अपनी कंजम्पशन के लिए चल गया होगा,
अब यहाँ साहब यहाँ 2-3 जो सबसे बड़े नेशनलिस्ट चैनल है उन्होंने कहा लुक दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, ही इज गेटिंग टीआरपी इन पाकिस्तान। अब टीआरपी से पैसे आते हो कुछ आता हो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जिसका जिक्र कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल, ये बहुत डीप रूटेड है और हमारी लड़ाई उससे है। हमारी लड़ाई मैं भी नहीं मानता चुनाव हो जाएंगे तो सब कुछ रोजी हो जाएगा या स्टेटहुड रिस्टोर कर। आपने जो तर्क दिए करप्शन के नाम पर इसके, उस हिसाब से तो हिंदुस्तान का कोई भी राज्य स्टेटहुड के लिए एलिजिबल नहीं है। सब जगह करप्शन है तो हटा दो, सब जगह यूनियन टेरिटरी, फिर वो झंझट भी खत्म हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट, इसे यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, that's an option. And anyway, एक और चीज जो मैंने अब तक महसूस किया, पहले भी थोड़ा बहुत था और अभी खास करके मैं थोड़ा स्टेट के नेचर को भी हमें समझना चाहिए। You need majority in parliament to form a government. ये basic truth है democracy. But your majority, if you get a huge majority, say 303, that's not a license to majority in politics. हमारी पूरी की पूरी स्टेट का मिजाज मनसा वाचा कर्मणा वो हो गया है मेजॉरिटी में। अब they think they can tell you anything and get away with it. मुझे आज भी याद है 370 की बहस या कई और बहसें जो हुई है पार्लियामेंट में, उन्हें तो मैं बहस भी नहीं कहता। This is not the kind of parliament Nehru would have envisaged. There would be a parliament one day जहां पर कहा जाएगा पास 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 और मीडिया का पूरा नैरेटिव कंट्रोल करके ये कहने लग जाएगा कि this was in the best national interest. Who decides the national interest? People of India. So you were voted not on those issues, but you take your majority as a license to convey that we were voted to do this. Those who were voted in, they are voted out also. History, मतलब मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां किसी को लगता था कि उसके रूल का कोई अंत ही नहीं। That's forever. एक है ना, एक प्रचार आता है हीरे का, हीरा सदा के लिए। Diamond is forever. Governments are not forever. They rise and they fall. What better example than Third Reich? Nobody could listen to against them. But today, in the same Germany, nobody wants to listen to about that phase of their history. So I think memory and history should be on the side of the people, and we should not allow. I mean, there would be differences of opinion. I believe, as my friend, he also said, but differences of opinion in a purely democratic manner can be resolved if you have decided that you have not given your thought in the custody of someone. Who decides for you? Who tells you what to do? Who tells you this is what? Second, which I have said earlier and I repeat, की सबसे बड़ी है ना कि उनको जमीन से बेपनाह मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत नहीं। You want territory of Kashmir. ये जो territorial desire है ना, that's actually putting everything in the backseat. अभी मेरे दोस्त सही कह रहे थे. I have many friends in Jammu side also. They are cast with the idea of abrogation. कश्मीर वैली में कितने लोगों ने बिहार उत्तर प्रदेश से आके जमीन खरीदी मैं नहीं जानता, लेकिन जम्मू में तो बहुतों ने खरीद ली। जम्मू की डेमोग्राफी बदलने के चांसेस, जम्मू के लोग परेशान हैं। तो आपने तो असल में मैं अभी भी दोहरा हूं, इन्होंने कश्मीर के लिए कश्मीर में चेंज नहीं किया। They wanted to use Kashmir as a geopolitical football for the entire North India. और इसलिए दुलत साहब जब आप चुनाव की बात कर रहे थे तो मुझे तो कहीं डर है कि 24 के लोकसभा के साथ न करो कि कश्मीर हार भी गए तो कश्मीर के नाम पे पूरा नॉर्थ इंडिया जीत ले। You can see a heinous crime which happened few days ago, which makes anybody sad about the state of affairs where we are heading. That heinous crime is also seen through the identity, through the lens of identity. ये हम कहाँ आ रहे हैं? This is a collective
एक खत्म ही करूंगा, और वो ये है कि कश्मीर अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल जो आपने कहा, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, सबसे बड़ा तो ह्यूमन राइट का इशू। जवाहर टनल क्रॉस करते ही सारे ह्यूमन राइट के मायने बदल जाते। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मैं कई दफा कश्मीर गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर, मेरे कई स्टूडेंट्स अब वहाँ टीचिंग पोजीशन में है। वो जो फ्रिस्किंग होती है ना, that frisking remains etched in your memory. वो इतनी brazenly inhuman frisking होती है। मेरे साथ मेरा स्टूडेंट दिल्ली से ट्रैवल कर रहा है, मेरा नाम मनोज झा है, and Manoj Jha is a license that I am a nationalist. I cannot hold guns and do anything. But somebody's name is Farooq. And the same process, I just finish in 30 seconds and it takes 5 minutes for him. That's actually subjecting somebody to everyday humiliation. Everyday humiliation. And any community which faces everyday humiliation, that community, you have to understand that rather than they understanding you and your politics, you should understand them, who they are, what they have suffered, what is the nature of humiliation. And I think finally I'll say something in parliamentary meet, and I stand by what I said. I said that by abrogating 370 and dismembering the state, we are creating our own Palestine. I stand by what I said. Generations will decide whether the decision was good or bad. They might think that they took a good decision. But as an outsider, I'm not a Kashmir, but I watch their pain. I empathize with that. I wrote a piece in 2010 explaining its own building, and it was published by Hindustan Times. A similar piece I wrote recently about Kashmir, it was not published. This is what in India has changed. I mean, that change is certainly not good for any community, whether Pandits from Kashmir or Muslims from Delhi or Gujar Bakarwals, because we are perpetually being produced, put under that thought machine which thinks that they only have all the answers. And one more thing to my friends from Kashmir Valley. We understand your anger. Although I'm very sorry to use the word we and your. That's the problem. But then don't allow your anger to give you a sense that all is lost. History of the people and communities are not just in terms of one election to another election. It takes time. We have a shared history. Nobody, whatever be the nature of their majority, has the power to destroy that shared history, that idea of shared existence, that idea of a pluralistic, secular society, because if all these things are lost, then we have nothing. No seminar, no discussion, no envisaging of a room where Raina Saab and Adil can speak their mind together. This space of in the space of India. We shall fight, we shall win. Zindabad. Thank you very much, Professor Jha. I don't need to thank him specially. Rita, why don't you wait for a couple of more minutes, please? Sunil Bakal is going to thank you and invite you for tea. Sunil. Okay. Thank you. Hello. Okay. Thank you everyone for attending this session on J&K The Way Forward. It's been a very fruitful discussion with constructive views from a diverse audience of esteemed speakers. A lot of takeaways from this session. The brainstorming and the exchange of ideas at least gives us a ray of hope to look forward. We all agree that the way forward is a revival of political
and democratic process which happens by way of dialogue. Now, a couple of things here, their suggestions. I think a couple of our friends came out with a 3 points which need to be implemented. And one of them is mainly the restoration of statehood, as Kaksab said. And also a very fruitful session was visit of delegations, so that delegations visit and connect with the grassroots, connect with people on the ground. With that, I would say that democratic governance also needs a peaceful environment. And all of us can at least try to put in our bit in whatever capacity we are. As part of the civil society, we can contribute our little bit. So having said that, once again, I would like to thank all of you and for sparing your time and attending this session. And we're all moving to the next room for tea. Thank you. Thank you. Please, those who have signed, where is the signing sheet? There is a signature paper, attendance paper. Where is that? So if anybody has not signed this paper, you're requested to sign this. Next home.